please take over. Hello. Am I audible, sir? Yes, Hello? sir, you are audible. Okay. So first of all, thank you very much, sir, for the introduction. So good morning, one and all. Today we'll talk about, we'll discuss about a shorter and smarter way to learn pharmacology. So next, please, next slide. So how you will go for the pharmacology? If you will see, there will be 30-40% questions in the drug inspector exam as well as assistant drug commissioner exam from the this pharmacology and toxicology. Let us discuss about how you will prepare for that. What are the smarter ways and shorter ways? What are the tricks to learn pharmacology? That we will discuss today. And after that, we'll also discuss some questions, which types of questions which will be asked in the drug inspector exam, which questions were asked in the previous exams, right? So let us start from the general pharmacology. So in the general pharmacology, we are going to start from the very ground level, right? So that's the roots of drug administration. So if you will see the last year question papers, there was one or two questions which was asked on this roots of drug administration topic. So let us start from the first root, that is a sublingual route. As you know, there are many more routes of drug administration are there. So first route, that is a sublingual route. So which drugs are administered sublingually? So that is isoprenaline. Then there will be nitroglycerin, then buprenorphine, right? So these are the drugs which are administered sublingually, right? So here we will take the one question. What is that question? Which drug is administered sublingually in the treatment of angina pectoris, right? So question is, which drug is administered sublingually in the treatment of angina pectoris? So what are the options? So options are A, nifedipine, B, propranolol, C, GTN, D, all of these, right? So these are the four questions in front of you. So what is the correct answer? What is the correct answer here? So obviously correct answer is GTN. So my question is, why GTN? What students are doing generally? They are directly jump on the answers. They don't know about them, means they are not discussing about the other options. But right way to go for the each and individual options, right? So first option is nifedipine. Why not nifedipine is used in this, right? So what is nifedipine? First of all, nifedipine is a calcium channel blocker, right? Before going to the calcium channel blocker, what are the types of the calcium channel? There are mainly four types of the calcium channel. One is L, second N, T, P. So L is long lasting, N is neuronal, T is transient, P is Perkins fiber. These are the four types of the calcium channel. So which drug will block the L type of calcium channel? So all the means 1,4-dihydropyridine derivatives, that is the nifedipine, amlodipine, and dipine series, they will block the L type of calcium channel. Next is the neuronal. Neuronal, which drug will block the N type of calcium channel? So there are the two drugs. One is the omega chondrotoxin, and another drug is that is a flunarizine. So flunarizine and omega chondrotoxin, these are the drugs which will block the N type of calcium channel. Next is the T type. So T type calcium, which drugs particularly block the T type of calcium channel? So what is the T? What T stands for? T stands for, that is a transient, right? I think so you have studied about the antiepileptic, that is the anticonvulsion. Go to the previous slide, right? Anticonvulsion, right? So that T type of calcium channel blocked by there are anticonvulsion drugs. So which are the anticonvulsion drugs? What is the tricks to remember the anticonvulsion drug that block the T type of calcium channel? So that is nothing but the ETV, right? E, ethosuxinamide. T, tigamine. V, valproate. So that valproate is nothing but the valproic acid. That is a salt of the sodium valproic acid. You can say that sodium valproate. So ETV, that will be block the T type of calcium channel, right? So here we have discussed that. Then, so these are the types of the calcium channel. The drugs which block that calcium channels we have discussed, right? So now, what are the calcium channel blockers? These are the drugs which block the calcium channel are called as CCBs. How will you classify the CCBs? So calcium channel blockers are classified by the three ways, right? So first is 1,4-dihydropyridine. Second is phenylalkylamine derivative.
Third is benzothiazepine derivative. See, we are discussing here one question. Now one question and first option. So that is a nifedipine. If we will go directly, yes, GTM, then we will go for the next question. So that is not a way to go for that. Right? So you have to go by that way. Means whenever the question which will be asked in the antihypertensive agent, so whenever question which will be asked in the anti-anginal agent, so that will be from the nifedipine is anti-anginal agent, nifedipine is anti-hypertensive agent also. Right? So let us discuss about the nifedipine. So what is nifedipine? So the nifedipine is a 1,4-dihydropyridine derivative. Only one drug is there, nifedipine. So what are the other drugs? So how will you remember the examples of the 1,4-dihydropyridine dipine series? What are the examples of that? That is a nifedipine, amlodipine, nicardipine, nitridipine, felodipine, then lastidipine, israeldipine, dipindipine, amlodipine. Right? So these are the 6 to 7 drugs you have to remember, which come under the class of the 1,4-dihydropyridine derivative. Right? So 1,4-dihydro, what are the examples of the 1,4-dihydropyridine derivative? That is the dipine series. Right? So nifedipine is a drug which is administered orally in the treatment of angina pectoris. Nifedipine is a drug which is administered, the transdermal patches are available in the market of the nifedipine. Nifedipine is a drug which also acts as a vasodilator. Right? So this is about the nifedipine. So this is about nifedipine. Again, so the question which will be asked in the medicinal chemistry, that is for that, which is a starting material for the synthesis of the nifedipine. So if you know the structure of the nifedipine, so 1,4-dihydropyridine, right? There is a CS3, then there is a benzene. You have to attach the nitro group at the ortho position. So which is a starting material for the synthesis of the nifedipine? Options are A, orthonitrophenylate, B, beta-nitrobenzaldate, C, para-nitrobenzaldate, D, all of these. Your correct answer is orthonitrophenylate. Right? So orthonitrophenylate is the starting material for the synthesis of nifedipine. Right? So this is in short about the nifedipine. Now next option, we will go for the propranolol. Right? So why not nifedipine? Because nifedipine is not administered sublingually. Right? So what is the route of nifedipine? That is the oral. What is the route of nifedipine? That is the transdermal. So next drug is a propranolol. What do you know about the propranolol? Right? So many more students are saying propranolol is a beta blocker. Which beta blocker it is? Non-selective. Yeah, non-selective beta blocker. What do you know about the cardioselective beta 1 blocker? Madam, can you please tell me the examples of the cardioselective beta 1 blocker? Yeah. Nebivolol. Yeah, then? Okay, see, very good. So we are not able to remembering the, we know one or two, right? So how will you remember the names of the cardioselective beta 1 blocker? How will you remember that? Ambe, A, atenolol, A, asbutalol, M, metoprolol, B, bisoprolol, B, betaxolol, E, ismolol, then nebivolol, then celiprolol. Number of drugs are there. So you can remember there are 7 to 8 cardioselective beta 1 blocker I told you. So this is the way, this is a smarter way, this is a shorter way to remember the names of the cardioselective beta 1 blocker. Why they are called as cardioselective beta 1 blocker? Because they act on the beta 1 receptor. Right? So these are the cardioselective beta 1 blocker. What do you know about the beta 2 blocker? So selective beta 2 blocker is nothing but that is the butoxamine. Butoxamine is a selective beta 2 blocker. So what else? So propranolol is a non-selective beta blocker. Only one example of the non-selective beta blocker, you know. What are the others? There are many more. So propranolol, nadolol, practolol, pindolol, then leobinolol, cartiolol. Okay, these are the non-selective beta blockers. Okay, so now what do you know about the propranolol? What are the uses of the propranolol? So propranolol used in the treatment of hypertension. Propranolol is used in the treatment of pheochromocytoma. What is pheochromocytoma? What students are? Yes, propranolol is used in the treatment of pheochromocytoma. What is use of means what is mean by pheochromocytoma? Pheochromocytoma, as its name indicates, pheochromocytoma. Pheochromo, chromaffin. Then cyte, cell, toma, cancer. Right? So chromaffin cell located in the adrenal medulla. So cancer of adrenal medulla located in the kidney. But it is not, sometimes it may not be, it may be cancer, it may not be cancer. What exactly happened in case of the pheochromocytoma?
The level of adrenaline is the large amount of adrenaline is secreted. That's why blood pressure is increases. Your normal blood pressure, 120/80. So in case of the pheochromocytoma patient, the blood pressure will be 200, that is a systolic, and 140 to 150, that will be the diastolic. So the drug of choice for the pheochromocytoma is a trazocine. The drug of choice for the pheochromocytoma is propranolol. Drug of choice for the pheochromocytoma is a phentolamine. Drug of choice for pheochromocytoma is a tolazolone. So these are the 4 drugs which are used in the treatment of pheochromocytoma. So propranolol used in the treatment of arrhythmia. Propranolol is also used in the treatment of anxiety. Propranolol also used in the treatment of migraine. What are the different types of the migraine, dear student? There are 2 types of the migraine: migraine with aura, migraine without aura. One is a common migraine, another is a classical migraine, as you know very well, right? So when we are just giving the simple therapy when common migraine is there, that is an SAID. Paracetamol and other drugs, ibuprofen are given in that condition. So after that, right, in the severe, we are also adding this. We are also giving the 10 mg of propranolol. We are also giving the ergot derivative, sumatriptan, ergotamine, ergometrin, ergotoxin, ergovinine. Number of drugs are there which are used in the treatment of migraine, right? So there are many more uses of the propranolol, right? So don't stick to the particular only one use, as you know very well, right? So propranolol used in the hypertension, propranolol used in arrhythmia, propranolol used in the anxiety, propranolol also used in the treatment of that is a pheochromocytoma, propranolol used in the treatment of migraine, propranolol used in the treatment of that is a phototoxicity, means right, thyrotoxicosis. Okay, so these are the various uses of propranolol. Now, what are the contraindications of propranolol? There is one techniques. Don't prescribe a propranolol himself. DPH, diabetes. Then another is the the pulmonary bronchial asthma. Yeah, pulmonary disease. There is a bronchial asthma. Last is a heart attack. So DPH, you remember. So propranolol is the contraindicated in the DPH, right? So these are the contraindications of the propranolol, right? So slide change करना है क्या आपके? अगर change करना है तो बताना. What is the nature of the propranolol? So the nature of the propranolol. So what is the nature means? What is the solubility of the propranolol? So propranolol is a lipid soluble. Why it is a lipid soluble? Right? It exists in anionized form. If it exists in anionized form, it is a lipid soluble. If it is a lipid soluble, hydrophobic. It is a hydrophobic, water insoluble. Water insoluble, so it enhances the absorption rate. If it enhances the absorption rate, it increases the bioavailability. It has a highest first pass metabolism, and it should be easily crossed the triple B. That is a मैं सर को कॉल करती, बट आपका आवाज यानी आप म्यूट पे हो गए ना अभी. हाँ ठीक है, मैं सर से बात करती. These are the particularly means nature of the propranolol, right? Which beta blocker is a water soluble, that is a metoprolol. Vice versa, it exists in ionized form, right? So then hydrophilic, then water soluble, then lipid insoluble, right? Then hydrophilic. Okay, then it decreases the absorption rate, then it decreases the bioavailability. Okay, so there are, right? So it should not easily process the triple B, right? So this is about the propranolol, right? So now you know that propranolol is a non-selective beta blocker. We have discussed about the propranolol in short, right? So next is GTN. What is GTN? GTN is a glycerotrinitrate. That glycerotrinitrate, which is a means nitroglycerin. Hello. Right? So nitroglycerin. Hello, sir. Hello. हाँ सर, स्लाइड चेंज करना होगा तो बताइए, क्योंकि yes sir, I'll let you know. Yeah, right. Okay. So nitroglycerin, which is also called as GTN, glycerotrinitrate. Okay, so nitroglycerin, which is also called as glycerotrinitrate. So which is the starting material for the synthesis of the nitroglycerin again? So there is a glycerin. So when glycerin is treated with the 3 molecules of nitric acid, it may lead to nitroglycerin. Okay, so GTN, which is administered sublingually in the treatment of angina pectoris. What are the other routes of the nitroglycerin? Nitroglycerin is also administered injunctionally. So what is injunctionally? Rubbing on the skin, right? So nitroglycerin is also administered so transdermally, right? So this is about. Okay, this is about nitroglycerin. Nitroglycerin is a drug of choice for the here. That is a correct option. So nitroglycerin is administered sublingually in the treatment of angina pectoris.
right? So in spite of the sublingual route, there is a oral route. You know very well what are the drugs which are administered oral route. So a number of drugs, right from the propranolol, then timolol, then next is amoxicillin, ibuprofen, diclofenac, number of drugs which are administered. Next, please. So I have given the chart there. Next slide, please. Yeah. So this is the chart. So nitroglycerin, isoprenaline, and buprenorphine, as I told you, clonidine, right? So isoprenaline is a sympathomimetic drug. Clonidine is a again selective alpha-1 agonist, and buprenorphine, that is opioid analgesics, right? So next route we have discussed, so that is the oral route. So in that oral, we have I told you the propranolol, then amoxicillin, diazepam, right? So then talbutamide, number of drugs are there. Pioglitazone, rosiglitazone, number of drugs are there. Rectal route, again rectal route, diazepam. Again here you can create a question: which drug is administered rectally in the treatment of febrile epilepsy? What is mean by febrile epilepsy? Diazepam. Yeah, epileptic attack occurs below 5-year children. So there is a high grade fever, that is your febrile epilepsy. Okay, so which is the drug of choice? Diazepam. So then indomethacin, in the market Indicab is there, ergotamine, right, paraldehyde, right? So these are the drugs which are administered rectally. Then next is a subcutaneous, that is a SC route. So insulin. Okay, so what is insulin? The question which will be asked: how many number of amino acid present in the insulin? Options 51. are, yes, very good. Options are 51, B 53, C 21, and D none of these. Your correct answer is 51. So as you know very well, so this 51 amino acids, there are two side chain. One side chain is A, side chain is a B. Why it is called as side chain A? Why it is called as side chain B? A is acidic, B is a basic. Right? Who discovered the insulin? Can anybody tell me who discovered the chemistry of insulin? Right? Who discovered the insulin? Insulin was discovered by Bantingan base. No, insulin was discovered by Bantingan base. The chemistry of insulin was discovered by Sanger. Right? So this is about the insulin. How will you prepare the insulin? There is a preparation of insulin, the lente, insulin, and number of, right? So in this way you have to go. Next route is a transdermal patches are available in the market. That is a nicotine, fentanyl, and nitroglycerin. Then nasal route. So which are the drugs administered by nasally? So the desmopressin, nafazoline, then tetrahydrozoline, phenylephrine, phenylpropanamine, oxymetazoline, xylometazoline. There are the number of drugs which are administered nasally. Right? So IV, so here I have just mentioned the only three. So that is the lignocaine, procaine, ceftriaxone, right? Then last is inansen, already we have discussed. So that is a nitroglycerin. Right? So dear student, this is the routes of drug administration. Right? So you made one chart, right? So one chart is equivalent to 5 to 10 pages. Yes, you just go through that chart and you create a questions yourself. You go by individual options, then you don't have any problem. Right? So next, please. Next slide. Right? So what are the factors modifying the drug action? Right? So this is a very important topic. From this factors modifying or factors affecting the drug action. So there will be 1 or 2 questions will be there in the exam. So how will you remember that? ABGS, then GRF, PPT. Right? So in this way, ABGS, GRF, PPT. Right? What is the ABGS? So first is the age. So if in the age there is a pediatric pharmacology. So as you know very well, you have studied in the dispensing pharmacy. There was one chapter that is a posology. In the posology, in that calculation part, how will you calculate the dose of a child? So there are different formulas you have seen in the that dispensing pharmacy. Out of that, first formula is Young's formula. Yes, can anybody tell me the Young's formula? So Young's formula, that is a pediatric formula, right? That is a pediatric pharmacology. How will you calculate the child dose? Age divided by age plus 12 into AD. What is AD? Adult dose. Adult dose. Right? So this is the that is the Young's formula.
So next is how you will again what are the other formulas for the pediatric pharmacology? Age upon 20 into 80, that is the adult dose, and this is the Dilling formula. Right? Then next is age divided by 24 into adult dose, that is a Calling formula. Right? So next is weight in pounds. Sometimes you can say that weight in LB divided by 150 into adult dose, that is nothing but the Clark formula. So in this way, you make one chart, right? You have to make a chart, then you don't have any problem. Okay, again, next part is a body size. You know, if you want to calculate the individual dose, again, you have studied in the same topic, that is a posology, right? So in that, how will you calculate the dose? That by two way, one is a BSA in meter square divided by 1.7 into average adult dose, right? So what should be the BSA, body surface area, divided by 1.7, right? So if you will calculate the body weight in the kg, so that is the individual dose is equal to body weight into the kg divided by 70 into average adult dose. Right? So in this way you can calculate. In this way you can calculate the body size. Right? So gender, whether that male or female. Right? In this way there are the species, race, then genetics, routes of drug administration we have seen in detail. Then food and diet, type of administration, physiological factor. So what are the pathologic states? Which disease is there? Then what is the tolerance? Okay, tolerance, and what are the certain emotional factors are there? Okay, so you have to focus on the factors modifying the drug action. So you have to go through the Barar. You can go through the, Tripathi also nice. They have given about the factors modifying the drug action. Next, please. Next slide, please. Yeah, drug. So what is the first pass metabolism? Which are the drug having the highest first pass metabolism? First pass metabolism, which is also called as pre-systemic metabolism. Okay, you have to just recall your biopharmaceutics. Whenever there, you were in the final year and you studied the first chapter absorption, in that routes, in that there is a first pass metabolism, which is also called as pre-systemic metabolism. Here, which drug has highest first pass metabolism administered orally? So again, I have a good mnemonics, I have a good tricks and techniques. How will you remember the drugs which has the highest first pass metabolism? VP Singh, not a popular prime minister. What is the trick? VP Singh, not a popular prime minister. V, verapamil. P, propranolol. Yes, salbutamol. VP Singh, not nitroglycerin. Then atenolol. Then next is the pethidine and morphine. Okay, so here that drugs are highest first pass. You can't say that orally, but because there are other drugs are there. Okay, so verapamil. Again, verapamil. What is verapamil? Verapamil is one of the important class of calcium channel blocker. So verapamil come under the class of benzo, means phenylalkylamine derivative. We have discussed only one class in that due to the timing. So 1,4-diiodopyridine. So second class in the calcium channel blocker is phenylalkylamine derivative, verapamil. Most of the students, they know only one example of the phenylalkylamine which come under the calcium channel blocker, but there are two examples. One is a verapamil, another is a anipamil. And third class of the calcium channel blocker is the benzothiazepine, that's the diltiazem. Okay, so verapamil, propranolol, we already discussed. Salbutamol. What is salbutamol? Salbutamol, salmeterol, bambuterol. These are the selective beta 1, right? Beta 2 agonist, selective beta 2 agonist, right? So if salbutamol, salmeterol, right, then you know tabutalin, these are the selective beta 2 agonists. What do you know about the selective beta 1 agonist? That is the dobutamine. Okay, nitroglycerin we already discussed. Atenolol. What is atenolol? We have discussed that atenolol is a cardioselective beta 1 blocker. So then pethidine. Pethidine is also called as mepridine, and pethidine and mepridine, these are the opioid analgesic drugs. Right? So these are the morphine analogs, right? These are the morphine analogs, pethidine and mepridine. These are the opioid analgesics. Next is the morphine. Okay, so morphine, there are many more derivatives of the morphine. Morphine, thibane, codeine. Okay, diacetyl morphine, which is also called as diacetyl morphine, is called as heroin. Okay, so there are the other drugs which has a highest first pass metabolism, right? But not administered orally. So there is a isoprenaline.
lidocaine. Lidocaine is nothing but the local anesthetic. Lidocaine, which is also called as lignocaine. Lignocaine, which is also called as xylocaine. Why it is called as xylocaine? Because xylene ring is present in the lidocaine. Okay. Then hydrocortisone, testosterone. These are the steroids. So hydrocortisone, that is a corticosteroid. Testosterone, that is a male sex hormone. Okay. Then lowest first pass metabolism. Which drug has the lowest first pass metabolism? How you can remember? PPT. How will you remember? PPT. What is PPT? Right? P-phenylbutazone. What is phenylbutazone? Phenylbutazone is NSAID. Phenylbutazone is a pyrazolidine derivative. What is the active metabolite of phenylbutazone? That is the oxyphenbutazone. Okay. Next is a phenobarbital. As you know very well, what is phenobarbital? So question was asked in the previous paper of the drug inspector. Phenobarbital is A. Very simple question was there. Option A, sedative hypnotic. B, anti-anxiety. C, antihistaminic. D, none of these. Obviously sedative hypnotic. Again, sedative hypnotics is classified by the long-acting, long-acting, intermediate-acting, short-acting, ultra-short-acting. How will you remember the names of the long-acting? Prime Minister. Example of the long-acting, that is the Prime Minister, phenobarbital and mepobarbital. Long-acting. Then how will you remember the names of the, that is the intermediate-acting? BSP, Bahujan Samajwadi Party, right? B, butobarbital. Yes, secobarbital. P, pentobarbital. So my dear student, we have the number of the tricks and techniques and mnemonics we have, right? So how will you remember the classification? So intermediate acting, right? And short acting, that is a HMT, exobarbital, methoxytol, and thiopental sodium. These are the examples of the short acting, ultra short acting. Right. Next is a pindolol. You know very well. We have discussed about the pindolol, which nucleus present in the pindolol. That is the indole ring. Pindolol is a non-selective beta blocker. Then tolbutamide. As you know very well, what is tolbutamide? Tolbutamide come under the class of the antidiabetic, and this antidiabetic is very, very important as the drug inspector as well as assistant drug commissioner exam point of view. Right. So what is tolbutamide? Tolbutamide come under the class of the sulfonylureas derivative. Sulfonylureas derivative is one of the important class of the OHA. What is OHA? That is oral hypoglycemic agent. So oral hypoglycemic agent, which is also called as antidiabetic, which is divided into 5 to 6 class. So first class is the sulfonylureas derivative. First sulfonylureas derivative is again divided into 2 subclasses. One is the first generation, another is the second generation. What are the example of the first generation? That is the tolbutamide, then chloropropamide, then chlorhexamide. Okay, so these are the examples of the first generation. What are the examples of the second generation? How will you remember? G, glypizide, G, glibenclamide, G, glyburide. Right? So these are the examples of the second generation sulfonylureas derivative. So next class is the biguanides. So in case of the biguanides, again, how will you remember? Prime Minister. So P for fenformin and M for metformin. As you know very well, fenformin has been withdrawn from the market due to the liver toxicity. And next example is metformin, which is widely used in the market, right? Along with the combination. Right. So along with the combination in the market, there is a PIOS-MF. So pioglitazone as plus metformin, which is a combination. Okay. So that is the tolbutamide. Okay, after the biguanides, there are the number of the classes are there. Okay, so there is a then D-phenyl analogs, which is also called as meglinetide derivative. So how will you remember? NRI, forget about I, naticlinide, or repaglinide. Okay, so again next is the next class number 4, thiaglitazone derivative. Right? Sorry, thiazolidinedione derivative. Class number 4. How will you remember? What are the examples of the thiazolidinedione derivative? Rosiglitazone, pioglitazone, troglitazone, cyglitazone, methaglitazone. Number of the drugs are there. Okay, so thiaglitazone has been withdrawn from the market due to the lactic acidosis.
And next class is the DPP4 inhibitor. Many more students, they don't know the example of the DPP4 inhibitor. So that is a, DPP4 inhibitors. There are many more the drugs which come under the class of the DPP4 inhibitors, right? So sitagliptin is one of the example of the DPP4 inhibitor. So this we will discuss when we'll go for the anti-diabetic. There are many more classes of there. Miglitol and others are the examples of the other classes, right? So this is the next is the theophylline. What is theophylline? Theophylline is a weak diuretic. You can say that. Theophylline is a weak diuretic. Theophylline is obtained from the thiacinensis. Then theophylline is obtained from the thiacinensis. Caffeine is obtained from the coffee arabica. Theobromine, which is obtained from the cocoa butter, right? So then caffeine is a chemically 1,3,7-trimethylxanthine, or theophylline is a chemically 1,3-dimethylxanthine, and theobromine is a chemically 3,7-dimethylxanthine. Okay, so these are the drugs which has a higher these are the drugs first pass metabolism. Whatever we have discussed, the lowest first pass metabolism. Which drug has the lowest first pass metabolism? How will you remember that? PPT. Okay, next please. Next please. Next slide. Yeah, so receptors. Go to the previous slide, please. So what are the receptors? Receptors are the macromolecular component. Your body is made up of the number of receptors, right? So before going to the receptor, what is affinity? Drug has ability to bind with the receptor. Then what is the drug efficacy? Drug efficacy is also called as intrinsic activity. So when drug combined with the receptor induce a conformational change and to produce a pharmacological effect, that is called as drug efficacy, which is also called as intrinsic activity. Okay, so before going to the types of the receptor, what is mean by the silent receptor? What is mean by the drug acceptor? What is mean by the spare receptor? So this is very important. What are the example of the silent receptor? Plasma protein, which is a well-known example of the silent receptor. When the drug combined with the receptor does not produce any pharmacological effect, that is called as silent receptor. Okay, so after that, what is agonist? What is a partial agonist? What is inverse agonist? What is antagonist? What are the example of the agonist? So what are the example of the agonist? What is mean by agonist? Example of the agonist, that is a morphine, adrenaline, non-adrenaline, isoprenaline, salbutamol. Number of the drugs are there. Number of the examples of the agonist. Next is what is difference between inverse agonist and antagonist? Right? Students are confused in between the inverse agonist and antagonist. What is inverse agonist? When drug activates the receptor to produce effect, right? To produce effect, but antagonize the well-recognized agonist. So it activates receptor to produce effect, but in a opposite direction of a well-recognized agonist, that is called as inverse agonist. Right? When it activates receptor to produce effect, but in opposite direction, inverse opposite, right? It activates receptor to produce effect, but in opposite direction of well-recognized agonist, that is called as inverse agonist. Well, an example of the inverse agonist is DMCM. What is DMCM? DMCM is dimethoxycarboxymethyl beta carbonate. That is a benzodiazepine inverse agonist. Okay, so the next is antagonist. What is antagonist? When drug block the action of full agonist, directly block the action of full agonist. What are the example? Atropine. What are the example? Propranolol. What are the example? Atenolol. What are the example? Bicuculin. What is bicuculin? Bicuculin is example of the GABA antagonist. What is the flumazenil? Flumazenil is a well-known example of the benzodiazepine antagonist. Right? So these are the drugs of the these are the examples of the antagonist. Next is partial agonist, and there was a question in the assistant drug commissioner example, right? Examination. What is the example of, which is an example of partial agonist, right? So nalorphine, well-known example of the partial agonist. There is one more example, that is the buspirone. What is buspirone? Buspirone is a chemically azaspirone decanediol. Then there is again dichloroisoproteinol, DCI. That is a well-known example of the partial agonist. So there are three examples. One is a buspirone, then there is a DCI, okay, and there is a
that is what? Nalorphine. Okay, so these are the examples of the partial agonists. Now we'll move to the, again, what are the types of the receptor? There are mainly 4 types of the receptor. First is type 1 receptor. Type 1 receptor is also called as ligand-gated ion channel receptor. Ligand-gated ion channel receptor is also called as LGIC. Ligand-gated ion channel receptor is also called as ionic receptor. These are the membrane-bound receptor. Okay, what are the example? Important is example of the type 1 receptor. This is nicely explained in the Rangendale. Okay, what are the examples of the type 1 receptor? That is a nicotinic receptor. Nicotinic receptor is divided into NM and NM. Okay, then GABA A receptor. What is the example of the GABA A receptor? That is a muscimol. That is a thiomuscimol. What is the example of the NM? NM agonist. NM agonist. That NM agonist is a PTMA. So phenylethymethyl ammonium. And what is the example of the GABA A agonist? So what is that? That is nothing but the muscimol and thiomuscimol. So this drug activates this receptor. Okay, now next is type 2 receptor. Type 2 receptor, which is also called as GPCR. This is very important receptor. Question may be asked on that, which is an example of the GPCR. G protein coupled receptor, which is also called as type 2 receptor. Type 2 receptor is also called as metabotropic receptor. Metabotropic receptor is also called as heptahelical receptor. Right? What are the example? What are the example? Muscarinic receptor. As you know very well, muscarinic receptor is again divided into 5 types. M1, M2, M3, M4, and M5. So what is M1 receptor? M1 receptor is also called as neuronal muscarinic receptor, which is a M1 agonist. So that is, many more students, they don't know the example of the M1 agonist. What is the example of the M1 agonist? That is the oxotrimorin. And what is the M1 antagonist? What is the example? What are the example of the M1 blocker? M1 blocker? Yes. How do you remember? Again, you will remember by the techniques. PT Usha. Forget about Usha. Remember the PT. So what is P? Pirenzepine. What is T? Telenzepine. Which nucleus present in the pirenzepine? There is a pyridobenzodiazepine. Which nucleus present in the telenzepine? Thiopinobenzodiazepine. Right? So this is a M1 blocker. I have just given the example. Right? So this is about the example of the muscarinic receptor. Again, next is adrenergic receptor. Adrenergic receptor is divided into 2 types. One is alpha receptor, another is a beta receptor. Alpha 1 and alpha 2, beta 1, beta 2, beta 3 receptor. Again, which is an alpha 1 receptor? What are the example of the alpha 1 agonist? Okay, so phenylephrine, right? And methoxamine, these are the example of. In this way, alpha 1 and alpha 2 example of the alpha 2 agonist. So that is what? Alpha 2 agonist, example of the alpha 2 agonist. That is what? Clonidine, apraclonidine, right? So number of the drugs are there. Okay, so this is about the type 2 receptor. Type 3, which is also called as enzymatic receptor. And enzymatic receptor is also called as enzyme-linked receptor. And enzyme-linked receptor is also called as enzymatic. So that is a membrane-bound. What are the example? Insulin receptor. Then, cytokine receptor. Next is a type 4 receptor. Type 4 receptor is nothing but the nuclear receptor, which is also called as protoplasmic receptor, which is also called as cytoplasmic receptor. Okay, what are the example? There is a steroidal receptor. Steroidal receptors are divided into androgen receptor. Then there is a estrogen receptor, estrogen related receptor, estrogen alpha receptor, estrogen beta receptor. Again, there is a glucocorticoid 1 receptor, glucocorticoid 2 receptor. Okay, so these are the steroid receptor. Then again, thyroid receptor. Okay, so these are the examples of the type 4 receptor. So here question will be asked on that, examples of the GPCR, examples of the enzymatic receptor. You have to focus on that. Okay, thank you. Next please. Next slide. Yeah, so active drug and their active metabolite. So here a question will be asked, which is an active metabolite of the that is a spironolactone. So spironolactone is what is spironolactone? First of all, spironolactone is a diuretic. So spironolactone is a potassium diuretic. So go in detail. So potassium diuretic, right? So potassium sparing diuretic. It consumes the potassium. That is why it is called as potassium sparing diuretic. Okay. So what are the examples? So that is a spironolactone. Okay. Then spironolactone, which is the active metabolite of the spironolactone, that is a candrinol. Right. So another example of the potassium sparing diuretic, that is a eplerenone. Write down, this is a well-known and newer drug of that is a aldosterone antagonist. That is a eplerenone.
Okay, so potassium sparing diuretic, in that there is a aldosterone antagonist, there is a spironolactone and eplerenone. Next is a phenacetin, which is the oldest drug, that is a paracetamol. Morphine, that is a codeine. Whenever there is a methylation takes place of the morphine, you will get a codeine. Very simple structure. Which nucleus present in the morphine? There is a phenanthrene ring. So whenever there are the OH, out of the one OH is replaced by the CH3. That's why I told you the morphine on methylation gives the codeine. Digitoxin, digoxin, trimethadione, dimethadione, you know very well. So that is the anticonvulsant. Then next is a primidone, as you know, oldest drug, phenobarbital. Then imipramine, desipramine. Imipramine is an antidepressant drug. Imipramine come under the class of the TCA. What is the TCA? Tricyclic antidepressant. Okay, so next is a chlorohydrate, trichloroethanol. Then amitriptyline, nortriptyline. Again, amitriptyline, nortriptyline, protriptyline, right? So these are the antidepressant, which is also called as thymoleptic agents. Then phenylbutazone, oxyphenbutazone, already we have discussed. Phenylbutazone come under the class of NSAIDs. So NSAIDs is divided into many more classes. Out of that, pyrazolidinediol. So in that, what is the well-known example? Phenylbutazone. So there is active metabolite is oxyphenbutazone. Next is azathioprine. Azathioprine, you know, azathioprine is a anti-metabolite, purine anti-metabolite, purine antagonist, that is anti-cancer. Okay, so 6-mercaptopurine, right? 6-mercaptopurine, you know very well, 6-MP, 6-TZ, these are the purine analogs, and as you know, these are come under the class of the anti-cancer, right? Then carbamazepine 9-10-epoxide. Carbamazepine is anticonvulsant, right? Anticonvulsant, which is also called as antiepileptic. Next, please. Next, I think so. Next chart, maybe prodrug and their active form. So in the prodrug and their active form, so in that, first is the levodopa, dopamine, right? Levodopa, dopamine. Then next is the diphenhydramine, epinephrine. Right. After that, you know very well, chloramphenicol palmitate. Right. So ester form of the chloramphenicol palmitate. You know why there is a need active form. You know, chloramphenicol is a phenicol may causes the, what are the side effects of the chloramphenicol? Yes, can anybody tell me? Bone marrow depression. How will you remember? BMD. Don't say BMW, not BMW. Remember the BMD, bone marrow depression. So in bone marrow depression, there is a thrombocytopenia, neutropenia, or plastic anemia that are characterized by the bone marrow depression. Right? So bone marrow depression, and one more side effect of the chloramphenicol. If you will see, chloramphenicol is a miscellaneous antibiotic. If you will go by the ecological classification, and if you will go by the chemical classification, chloramphenicol is a nitrobenzene derivative. Right? So chloramphenicol causes the two side effects. One is the gray baby syndrome. Another is a bone marrow depression. What is gray baby syndrome? So what exactly happened in case of the gray baby syndrome? There is one enzyme. The name of that enzyme is a glucuronidase conjugase. So glucuronidase conjugase, this is an enzyme which is not developed in the children. So that's why it may leads to that there is no proper metabolism takes place. So it is not developed in the children, and it may leads to gray baby syndrome. So that is a chloramphenicol. Then sulindac, sulfide metabolite of the sulindac. Sulindac is a well-known example of the indole acetic acid derivative. Here we are discussing also classification, right? So sulindac and then indomethacin, indole acetic acid derivative. Indole acetic acid derivative is one of the important class of the NSAIDs. Proguanil, cycloguanil, proguanil, triazine. Also, this is also one of the active form. There are two active forms. One is a proguanil, another is a cycloguanil. One more active form is a write down, that is a proguanil triazine. And you know, proguanil is an anti-malarial drug. So if a question which will be asked here, what is the mode of action of proguanil? Because the mode of action of proguanil is totally different from the other anti-malarial drugs, because proguanil and cycloguanil, proguanil triazine, they inhibit the dihydrofolate synthase. The mode of action of the proguanil is similar to that of the sulfonamide.
Okay, so as you know, so there is a PABA. From PABA is nothing but the para-aminobenzoic acid. You will get the dihydrofolic acid, right? Dihydrofolic acid from PABA in presence of the DHFS. What is DHFS? Dihydrofolate synthesis, and the dihydrofolate synthesis is inhibited by the proguanil. From the dihydrofolic acid, you will get the tetrahydrofolic acid in presence of the DHFR. What is DHFR? Dihydrofolate reductase. Prednisolone, which is a glucocorticoid, that is a steroid. Then bacampicillin, ampicillin. You know, ampicillin is a chemically alpha aminobenzyl penicillin. What is the ampicillin? Ampicillin come under the class of the aminopenicillin. Ampicillin come under the class of the extended penicillin. Right? Chemically, it is aminopenicillin, ampicillin, and amoxicillin. Next is a bambuterol, salbutamol. As you know very well, the beta agonist, beta 2 agonist, cyclophosphamide, 4-hydroxycyclophosphamide. This is a well-known example of the anti-cancer agent. Cyclophosphamide is a nitrogen mustard derivative. So in the nitrogen mustard derivative, there are many more examples. There is a cyclophosphamide, aldophosphamide. There are two active forms. One is a cyclophosphamide, another is a 4-hydroxycyclophosphamide. Write down, there is one more active form, that is the aldophosphamide. Right? So very simple structure. If you will draw the structure, how will you draw? Very simple techniques. So you have to draw the first of all the cyclohexane, then OPN, P double bond O, N, CH2CH2Cl, CH2CH2Cl. This is very simple structure. How you will go for the 4-hydroxy? Hydrolysis takes place at the 4th position. You have to just attach the hydroxy group. That's it, and that is a 4-hydroxycyclophosphamide. Cyclophosphamide, aldophosphamide, then iphosphamide, then chlorambucil, then there is also mustine hydrochloride, which is also called as mechlorethamine, and these are the examples of the nitrogen mustard derivative. See, dear student, we are discussing here classification also, and for your kind information in the drug inspector examination, you have to give more focus on the classifications and examples. Okay, so nitrogen mustard is one of the class of the alkylating agent. Alkylating agents are divided into the 5 classes. First is the nitrogen mustard. Before the nitrogen mustard, there was a sulfur mustard, which were used in the Second World War. Okay, so nitrogen mustard, then second class is a alkyl sulfonate. There is a busulfan. Okay, then nitrosoureas. How will you remember the example of that is Cl. So that is a lomustine and carmustine. So carmustine, lomustine, these are the example of the nitrosoureas. Okay, then triazine derivative. So there is a triazine, right? Then there is also thiotepa. Don't say thiopeta, it's thiotepa. Okay, then triazine again, procarbazine, dacarbazine. These are the alkylating agents. Then next is antimetabolite and others. Okay. Next is sulfasalazine. So this is a well-known drug. Sulfasalazine in presence of azo reductase. If you will see the structure of the sulfasalazine, benzene, then OH, N double bond, and that's why that is called as the enzyme is azo in nitro. So reduction takes place, and sulfasalazine in presence of azo reductase, you will get the 5-ASA. What is the 5-ASA? 5-ASA is nothing but the 5-aminosalicylic acid. So this 5-aminosalicylic acid, which is also called as mesalamine, and next is the sulfapyridine. Right? So sulfasalazine, 5-aminosalicylic acid plus sulfapyridine. These are the active forms. And sulfasalazine, which is used in of ulcerative colitis. 5-aminosalicylic acid, which is used in the treatment of colon cancer, mesalamine. Okay, so sulfapyridine. Okay, so that is a sulfa, means sulfa derivative. Sulfa drugs are there, which was the first sulfonamide, that is a prontosil. It was a dye, right? There are again your sulfonamides are classified by the long-acting, intermediate acting, and short acting. Okay, there are the 2 classifications, right? So whenever we'll discuss the classification at that time, I'll tell you. Next is acyclovir triphosphate. Next is acyclovir, ganciclovir, famciclovir. These are the antiviral drugs. Okay, purine analogous chemically. Okay, and the acyclovir, which is used in the treatment of the ophthalmic viral infection. They are used in the treatment of the HSV1, herpes simplex virus. Right, HSV2, herpes simplex virus 2, they are used in that condition. Mercaptopurine, so we have discussed fluorouracil monophosphate,
alpha methyl dopa. That is alpha methyl norepinephrine. You know, alpha methyl dopa, which is also called as false, right? So that is the antihypertensive drug. Okay, then benazepril, benazeprilat, enalapril, then cosinoprid, enalaprilat. Again, there is quinalaprilat. Okay, only 2 ACE inhibitors. They don't have the prodrug, means they don't have the active form. That is a captopril and lisinopril. In spite of these 2 ACE inhibitor, ACE, what is mean by ACE? Angiotensin converting enzyme. So what is the role of the angiotensin converting enzyme? When angiotensinogen 1 to angiotensin 2. So conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2, there is the requirement of the ACE enzyme, and that enzyme, you know, angiotensin 2 may leads to increase in the blood pressure. It may leads to retention of the water. Okay, so it may leads to increase in the blood pressure. It may leads to peripheral, I mean, a total peripheral resistance is increases, means the systolic as well as diastolic blood pressure is increases. Okay, so that is the ACE inhibitor. Clozapine is a newer ACE inhibitor, which was the first ACE inhibitor, right? Which was the first ACE inhibitor was there, right? You have to remember like that, right? So it was a clozapine. Okay, so next, please. Next slide. Next, please. Next slide. I think so. Next slide will be plasma half-life. Yeah. So which drug has the highest plasma half-life? That is a digitoxin. Okay. So that is a 7 days. Then phenobarbital 90 hours. Phenylbutazone 60 hours. Digitoxin 40 hours. Doxycycline 20 hours. Aspirin, you know what is aspirin? Acetyl salicylic acid is also called as aspirin. Okay, so 4 hours. Penicillin G. Penicillin G is nothing but the benzyl penicillin. Benzyl penicillin come under the class of the beta-lactam antibiotic, and which has a 30-minute and 0.5 hours, means half an hour. That is a plasma half-life. Okay, so question may be asked, which drug has the highest plasma half-life? Obviously, there is a digitoxin. Okay, next, please. Next, please. Yeah, plasma PPBs, that is a plasma protein binding. You know, warfarin, that is the anticoagulant. So it has a 99%. Nafcillin, it's again, you know, that is a penicillin derivative, penicillinase resistant penicillin. How do you remember the penicillin resistant penicillin? That is a silin series, nafcillin, then carbencillin, then cloxacillin, oxacillin, dicloxacillin, floxacillin, etc. Phenytoin 90 hours, digitoxin, you know, you just say that PDS, that is a phenytoin, digitoxin, and sulfasalazole. Again, tolbutamide has a 90% protein binding, sulfadiazine 50%, sulfamethoxam 30%. Next slide, please. Yeah, this is very, very important adverse effect of the drugs, right? So I have given this slide here, only 15 drugs and their side effect. So I have the one chart of there are many, more than 120 drugs and their side effect. So if you will go, you should be smart. What is a smarter way to go for the drug inspector exam? You make a chart again. Right? No need you have to go through the KD Tripathi at this level. No need you have to go through the Rangendale. No need you have to go to the Katzan. No need you have to go through the others pharmacology books, each and individual chapters. Better way, make one chart of all the drugs which come under all the pharmacology. Right? So what is that ACE inhibitor? What is the common side effect of the ACE inhibitor? That is a dry cough. Amphotericin B, nephrotoxicity. Ampicillin, hypersensitivity. See, so here I have given the drugs. Again, I'm sharing with some mnemonics. So there are many more. So if you will ask me what is the side effect of the atropine, I have a very good technique. Dum dum diga diga, mosam biga biga. What is the side effect of amphetamine? Dilwane dulhaniya le jayenge. So these are the techniques to remember the side effect of the, the drugs. Okay. So what is the side effect of the quinidine? Right? What is the side effect of quinidine? So because you know, most of the students they don't know that is the side effect of the quinine sulfate is a black water fever, and black water fever is a major side effect of the quinine. Then what is the major side effect of the penicillin G? That is a Jarvis-Hexheimer reaction.
right? Penicillin G, major side effect of the penicillin G is a Jarvis-Excimer reaction. Okay, now there is a one side effect, ototoxicity. Which drug has the ototoxicity side effect? Again, I made a mnemonics: SFC, streptomycin; F, furosemide; C, chloroquine. Now, what is streptomycin? As you know very well, streptomycin is a aminoglycoside antibiotic. So what are the examples of the aminoglycoside antibiotic? Aminoglycoside antibiotics, most of the students, they know that aminoglycoside antibiotics, streptomycin, kanamycin, sopramycin, gentamicin. Here, if you will see, can anybody tell me the spelling of the gentamicin, please? Anyone? Please? That is also a well-known example of the aminoglycoside antibiotic. Yes, please. GENTAMYIN. MY. You are saying MY? Yes. Yes. So that's why I ask you. This is not a spelling of the gentamicin, dear. That is a GENTAMICIN. Again, why I? Why not Y? Which are the Y? Streptomycin, MYCIN. Kanamycin, MYCIN. MYCIN. Why there is a MYCIN? Because streptomycin is obtained from the. Do you know the one movie Lagan? In that there is one heroine. What is the name of the heroine in the Lagan? Gracie Singh. How will you remember the sources of the streptomycin? Gracie Singh, Gracious. So streptomycin is obtained from the Streptomyces gracious, right? So kanamycin is obtained from the Streptomyces kanamyceticus. So those drugs are the natural. Hello. Those drugs come under the natural aminoglycoside. They are the MICIN. So gentamicin, cezomycin, amikacin, aminoglycoside. And you know, natural whatever I tobramycin, streptomycin, kanamycin, right? So these are the drugs. So kanamycin, streptomycin, okay, neomycin, NEOMYCIN, streptomyces freddi. And you know the question which will be asked for the sources, right? We were discussing the side effect. What is the side effect of the streptomycin? Ototoxicity. Ototoxicity is a side effect of also chloroquine. Ototoxicity is also side effect of furosemide. Right? So you have to remember like this. SFC, and what is the side effect of the SFC? That is ototoxicity. Now go in detail, what is ototoxicity? Ototoxicity is nothing but the damage of the 8th cranial nerve. What is the 8th cranial nerve? Go in your HAP, there is a vestibulocochlear. And that vestibulocochlear, damage of vestibulocochlear, it may leads to, sometimes it may leads to permanent deafness. Okay, so the common side effect, anti-TB, hepatotoxicity, okay, aspirin, hepatotoxicity, atropine, as I told you, I have the very good techniques. Now we don't have time to tell. Then chloroquine, phototoxicity, ciprofloxacin, phototoxicity, clofazimine. What is a clofazimine? Anti-leprotic drug. What is a clofazimine chemically? It is a phenazine derivative anti-leprotic drugs. And there is a pigmentation of skin. There is a discoloration of urine. Okay, clozapine. What is clozapine? Clozapine is nothing but the antipsychotic. Clozapine is nothing but the atypical antipsychotic. But you know, antipsychotics are divided into typical antipsychotic, atypical antipsychotic. And clozapine is an atypical antipsychotic. Why it is atypical antipsychotic? Because it does not block the D2 receptor, because it blocks the D4 receptor as well as 5-HT3 as well as 5-HT4 receptor. That's why it is called as atypical antibiotic. Okay, clozapine, as its name indicates, there is a dibenzoazepine ring is there. Okay, so right, so these are the drugs and their side effect. You have to remember, you have to make a chart, then you don't have any problem. Okay, right? So then androgen, what is the side effect? Virilization of the limb. Then thalidomide, the question was asked on the thalidomide, right? Phocomelia, what is phocomelia? Seal like a limb, right? What is the side effect of the, again, individual drug isoniazid? What is isoniazid? INH. What is INH? Isonicotinic acid hydrazide. And INH and isonicotinic acid hydrazide, these are the anti-tubercular drug. How will you classify the anti-tubercular drug? First line drug, second line drug. Okay, so first line drug, how will you remember? Paris, don't say Paris. Paris. First line drug is a Paris, P-pyrazinamide, E-ethambutyl. Yes, right? P-pyrazinamide,
Okay, so E-ethionamide. Okay, so pair is R, P pyrazinamide, E ethambutal, R rifampicin, I isoniazid, S streptomycin. Right? Second line drugs: ethionamide, prothionamide, then number of the pass. Okay, okay. Then cycloserine. What is different between the cycloserine and cyclosporin? Some students are saying spelling a difference. I said no, no doubt. There is a difference between the spelling, but cycloserine is a antitubercular antibiotic. Cycloserine is a that is a pharmacology cell wall synthesis inhibitor. Right? Cycloserine is an antitubercular antibiotic. Cycloserine is a chemically D-alanine analogous. Cycloserine is a chemically isoxazoline derivative. What is a cyclosporin? Cyclosporin is a pharmacology immunosuppressant drug. This is a major difference. Okay, what is the side effect of the ethambutol? What is ethambutol? Ethambutol is denoted by the EMB, and EMB, what is the side effect of EMB? That is a optic neuritis. Before the optic neuritis, there is before the ethambutol, there is isoniazid. What is the side effect of the isoniazid? Peripheral neuritis, peripheral neuropathy, peripheral neurotoxicity. How will you prevent the peripheral neurotoxicity? So peripheral neurotoxicity, peripheral neuropathy, it can be prevented by the vitamin B6. And what is vitamin B6? Pyridoxine. 100 mg of pyridoxine whenever you will give, it can be treated. It can be treated. Okay, so there are the number of the drugs and the side effects. Okay, next please. I have given just some few we have discussed here. Next please. Yeah, so here we'll see the question: which drug is administered sublingual in the treatment of the angina pectoris? As you know very well, we have seen in detail propranolol, nifedipine, GTN, nicorandil. If you will see, all these drugs are the anti-anginal agent. But question is a route sublingual, right? So that's why your correct answer is GTN. Now you can ask me what is nicorandil. It's a potassium channel blocker. Next, please. You know, potassium channel blocker is a nicorandil. You can ask me the potassium channel opener, that is a pinacidil. Okay, which drug is used in the treatment of febrile epilepsy? This also we have discussed. If you will see, all drugs are the anticonvulsion: phenytoin, diazepam, phenobarbital, valproate. But question which is depend on the based on the route. So that's why your correct answer is the diazepam. Phenytoin, what is phenytoin? Phenytoin is also used in the GTNC. What is GTNC? Generalized tonic-clonic epilepsy. Phenobarbital, which is also used in the absence seizures. And then valproate, which is valproate is nothing but the sodium valproate. You can say that, sir, why diazepam? Because phenytoin, already I told you, GTNC, phenobarbital, absence seizures. Sodium valproate is used in the myoclonic epilepsy. Next, please. Yeah, which is an active metabolite? Already we have discussed. That is a spironolactone. That is a candrinone. What is active metabolite of the then primidone, phenobarbital, eplerenone? It's a newer aldosterone antagonist. Codeine, morphine. Next, please. What is the plasma half-life of the digitoxin? You know very well, that is 7 days, 90 hours, phenobarbital, 60 hours, phenylbutazone, 40 hours, that's a digitoxin. Doxycycline is 20 hours, and 4 hours is the aspirin, and half an hour is the penicillin G. Already we have discussed. Next, please. So you have to go by this way, okay? Which is an example of the metabotropic receptor. Before going to the question, what is the metabotropic receptor? Metabotropic receptor is nothing but the GPCR. GPCR is nothing but the G protein coupled receptor. G protein coupled receptor is nothing but the type 2 receptor. Type 2 receptor is nothing but the 7 transmembrane heptahelical receptor. Okay, so your correct answer is muscarinic receptor. Nicotinic, that is come under the type 1. Insulin, that is a type 3. And thyroid, you know very well, that is a type 4. Next, please. Yeah, which is an active metabolite of the bambuterol. Obviously, there is a salbutamol. Next, please. Yeah, which drug has the highest protein binding? Tolbutamide, digitoxin, they have the 90%. Warfarin is a 99%. Sulfadiazine is a 50%. Obviously, your correct answer is a warfarin. Next, please.
After that, whatever we have discussed, we have again, I'm telling you, this we have discussed in a very short, okay, due to the lack of the time again, right? There will be many more, there will be plenty, right? So next part is very, very important as a drug inspector as well as assistant drug commissioner exam. So that is a classification, pharmacological action, mode of action, side effects, contraindication, and uses, right? So out of that, if we will go by, if we will do side effect of all the drugs and all the classes, then you don't have any problem. Antihypertensive, you have to go for the classes: alpha blockers, beta blockers, alpha adrenergic blocker, beta adrenergic blocker, okay. Then calcium channel blocker. There are many more classes are there. Then next is a opioid analgesic, antitussive, NSAID, sedative hypnotics. Again, NSAIDs, that is how will you remember the IO techniques? How will you remember the classification of the NSAID? Sachin and Saurav never play cricket on poorly maintained pitches, right? Again, salicylic acid derivative, aryl acetic acid. In this way, you have to remember the classification. Sedative and hypnotics, we already discussed. That is a barbiturates and benzodiazepine. Okay, then sedative and hypnotics, barbiturates and benzodiazepine. Barbiturates is again divided into long-acting barbiturates, short-acting, intermediate acting, and short-acting. Okay, benzodiazepine. Again, benzodiazepine, you can go by the anti-anxiety. Then there are some benzodiazepine which are the anti-anxiety. There are anticonvulsant, and there are some benzodiazepine which acts as a sedative hypnotics. A very good technique. Darunifilm at midnight. All the drugs come under the sedative hypnotic. Dokla, all these come under the anti-anxiety. Okay, and Sidac, all these drugs come under the anti-epileptic. Right? Again, I just telling you the mnemonics. Right? So I will discuss in detail. Local anesthetics, you know very well, there are two classes. One is a amide derivative, another is ester derivative. You know very well amide derivative. I'm just telling the one example of the amide derivative. That is, xylocaine. Xylocaine is also called as lignocaine. Lignocaine is a lidocaine. Okay, right? Then bupivacaine, etidocaine, mepivacaine, number of drugs are there. Then ester derivative, procaine, benzocaine, right? Then prelocaine, right? And tetracaine. Next is a chemotherapy, use antibiotics, and you know very well there are 19 to 21 classes are there. Antifungal agent, anti-cancer drugs. There are 3 to 4 classes. Recent technique, recent classifications. Many more students, they don't know that. What are the newer drugs? Temozolomide and select, right? Temozolomide. Okay, so there are many more the newer drugs, anti-cancer drugs are there. Antidiabetics, that is OHA, oral hypoglycemic agent, drug affecting CNS, hormones, and others. Right? So these are the main part of your exam. I can say that this is a heart of pharmacology. Okay, heart of particularly, drug inspector examinations. Most of the questions which will be asked from the pharmacology exam. Okay, so and what are the reference books? You know very well. That is a well-known book. That is a standard and reference book. Goodman Gilman, K.D. Tripathi, Rangendale, Satuskar Vandankar, Lippincott, Sharma and Sharma, Kadzang. Many more Indian author books are there. Okay, Sharma and Sharma. Then others, SR Saif. Number of books are there. Okay, so this is in short whatever we have discussed today. How to learn pharmacology smartly and shortly. Okay, so if you have any question, you can ask. Thank you. Yes. So student, if is there any questions, so please write in the chat box. So we will discuss on that question. Okay. So thank you, Rajendra sir. I think we will continue for the next session. And we discuss the question at the last. Sir, मेरा sound clear है? Is my voice is clear? Yes. Okay, thank you. Varun sir, next slide, please.
A question, Rajendra sir, how to Yes, sir. classification, how to learn classification, Yeah, there are how to number learn of techniques. classification. Yeah. So you have to go for the tricks and technique for the some classification, not for all, because So, for example, as I told you, the anti-conversion classification, right? How will you remember the anti-conversion classification, right? Then how will you remember the NSAID classification? As I told you, the Sachin and Saura neoplated on poorly maintained pitches. How do you remember the classification of anti-conversion? Dr. Vaisab new PCO. What is Dr. Vaisab new PCO? D, deoxybarbiturate, right? B, benzodiazepine, right? Then H, identoin derivative. So in this way, there are 11 classes are there, right? There are many more techniques we have. Okay, these are just trailer of the mnemonics and tricks. Okay, so you have to make a mnemonics, you have to make a tricks, and then you can remember easily. You have to make a chart of the classification, stick in your study room. That is the way to go for the drug classification. Sir, the mnemonics we make, no, we have to practice them also, no, because with Yeah. drug that we have to remember. Yeah, that's why I told you now. You have to go for the mnemonics for the some classifications, right? Not for all, because you have to remember the drugs also, right? Better way you remember the mnemonics on the basis of their names. For example, I'm telling the one mnemonics to you. How will you remember the therapeutic classification of the adrenergic agent? Appa balwan chowk se Pune, ABC se Pune, A anorectic agent, B bronchodilator, C cardiac stimulant. ABC उसके नाम से ही है. A anorectic, B bronchodilator, C cardiac stimulant. Then ABC, P pressure agent, U uterine relaxant, L nasal decongestant. That's it. Now, what are the examples of the anorectic agent? Sibutramine. Okay, so in this way you have to remember. Not for all. Okay. Now there is no technique. You can't remember the antihypertensive classification, which is a very U classification. For the antihypertensive classification, better way, drug acting on CVS, right? Anti-anginal, antiarrhythmic, then cardiotonic, then ACE inhibitor. Then you already studied the alpha blocker. Or you have to combine. That will be the antihypertensive classification. Only diuretic you have to add in that. That's it. Okay, so that's why you have to study this smartly. Okay, anything else? Okay, so thank you so much, Rajendra sir. Thank you so much. So students, we all know pharmacology is a vast topic actually, and I'm sure you will have a lot of questions about it. Okay, and Rajendra sir can answer all these questions. However, time is also a concern, right? So Rajendra sir, thank you so much for this wonderful interaction and your wonderful ways to remember or the short forms which you have provided. So thank you so much, Rajendra sir. Thank you, sir. Thank you very much, Warren sir. Thank you, sir. Over to you, sir. Thank you. So students, now we will move to our second topic of today, which would be about personal interviews. However, this topic is not limited to personal interviews. We will also talk about, in brief, we will also talk about the overall process, eligibility, right? And now one of the questions which usually comes to students' mind, that there are only 50 vacancies, 80 vacancies, 70 vacancies, and there are thousands of applicants. Now, how will I crack the exam if there are thousands of applicants, right? And that is the reason 50% of the students give up. They don't even apply for it. Then some people who apply for it, don't even start preparing. Right? So what do we need? We need that self-motivation throughout the preparation for government jobs. We need that attitude which says never give up. Keep trying, keep working hard, practice,
Even if you feel the subjects are boring, still you'll have to learn them. And people, trust me, most of the good things in life are actually boring, right? Okay. So to answer all these questions, sir, how do we start preparing? What is the eligibility, right? How will we survive with so many students, so many people applying for, such small vacancies? How will we survive? How do we ensure that we get the job? All these questions will be answered by our next speaker. Our next speaker is Mr. Meher Tundulwar. So Meher sir is, for last 15 years, he is into the placement of pharmacy students. Okay, he has worked as a mentor and coach for many pharmacy students. He knows in and out of the whole pharma industry, especially when it comes to jobs. Okay, so Meher sir himself is a scholar. He has, won gold medal at the university level in his pharmacy. Okay, so now I request Meher sir to please take over, and he will take us through the tricks and tips of interview skills. Meher sir, over to you. Yes. So thank you, Varun sir, for the introduction. Okay. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे बी फार्मा स्टूडेंट है, दे आर रियली इंटरेस्टेड टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं. जिस दिन से हमने ड्रग इंस्पेक्टर के सेशन लेना स्टार्ट किए उस दिन से कुछ जो फ्रेशर स्टूडेंट है बी फार्मा फाइनल ईयर के भी, जो बी फार्मा पास आउट है, उनकी भी इंक्वायरी आ रही है कि सर ऐसा कुछ नहीं है क्या कि हम लोग अभी जस्ट बी फार्मा पास आउट है और हमें ड्रग इंस्पेक्टर के लिए चांस मिलेगा. किसी शेड्यूल C1 का एक्सपीरियंस चाहिए, 18 मंथ चाहिए, 5 इयर्स चाहिए. तो इसीलिए मैंने हर एक स्टेट वाइज जो है एक्सपीरियंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया. तो मैं अभी आप लोगों को कुछ स्टेट बताऊंगा जहाँ पे ओनली बी फार्मा रजिस्ट्रेड मींस बी फार्मा पास आउट कैंडिडेट इज आल्सो एलिजिबल फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपको शेड्यूल C1 का 18 मंथ का या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. अब मैं आपको स्टेट के नाम बताता. मध्य प्रदेश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ओनली बी फार्मा है, छत्तीसगढ़ में ओनली बी फार्मा है. दोनों भी स्टेट में हिंदी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर हिंदी सब्जेक्ट आपके पूरे 12th तक के या फिर डिग्री में कहीं ना कहीं आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ चाहिए. ओके, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, आसाम में, गुजरात में, केरला में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में, इतने स्टेट में एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर. ठीक है, तो आज से अभी से ही आप लोग अगर फाइनल ईयर में होंगे या फिर फाइनल ईयर पास आउट होंगे तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ओके, और जब आप कोई स्टेट का 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस लेते हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दी नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो डाउट क्लियर हो गया. कौन से स्टेट बताया मैंने? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरला, आसाम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़. ये सभी स्टेट में बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है विदाउट एक्सपीरियंस. इसी बेस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकली थी उस पे जो स्टे आया हुआ है, इसी बेस पे आया है कि अदर स्टेट में अगर क्राइटेरिया में बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं. सो माइट भी 2-3 महीने में नोटिफिकेशन आएगा, वो किसी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, किसी के लिए नहीं भी रहेगा. अगर बी फार्मा ग्रेजुएट के लिए अगर महाराष्ट्र ओपन हो जाता है तो कंपटीशन कंप्लीटली टफ रहेंगी, क्योंकि फ्रेशर्स को कॉम्पीट करना एक्सपीरियंस लोगों के लिए टफ जाता है. कंपटीशन सिर्फ एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कैंडिडेट में है तो वो एक लेवल पे होती है, पर अगर फ्रेशर कैंडिडेट अगर रेस में उतर जाएंगे कॉम्पिटिटर के साथ में तो कंपटीशन बहुत टफ रहेंगी. इसलिए सभी लोगों को हर एक तरह का माइंडसेट बना के ही उतरना है कि मैं थ्योरी में तो क्वेश्चंस में मार्क्स लूंगा ही लूंगा, पर मुझे इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा. ओके, तो जैसे अभी असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वैसा ही बहुत सारे जो स्टेट लेवल के कुछ वैकेंसीज निकलते हैं वहां पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के चांसेस होते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. तो हम लोग आज कुछ ट्रिक एंड टिप्स देखते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक किया जाए.
ये एमपीएससी का जो अभी का मैंने बताया आपको जो वैकेंसीज निकली थी उसके बारे में, तो ये तो हम लोग अभी सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे। वरुण सर सिलेबस नहीं डिस्कस करना है, आगे का लीजिए, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट हमने लास्ट सेशन में लिया था। ठीक है, मेनली क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट, उसके बाद में एप्टीट्यूड, ये आपको रिटन टेस्ट में करना ही करना है। सिर्फ अगर आप थ्योरी ही पढ़ के जाओगे, सिर्फ आप फार्मा रिलेटेड थ्योरी पढ़ के जाओगे, तो आप 60 या 70% जो सर है वन क्वेश्चन। सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छत्तीसगढ़ की रायपुर की जब एग्जाम थी 4 साल पहले, 4 या शायद तक 4 5 4.5 साल हो गए, तो वहां पे उन लोगों ने छत्तीसगढ़ के जो भी बेस क्वेश्चन है, विच इज सर द, मुझे कुछ सवाल पूछना है। हाँ बोलो। सर मेरा नाम भूषण पाटिल है और मैं अभी फाइनल ईयर बी फार्मेसी डिग्री कर रहा हूँ। सर हाँ क्या हम भूषण, जॉब करके भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हुए भी हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर हमें पास आउट होने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स जॉब का करते हुए ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है। विदाउट जॉब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि ओके ये वैकेंसी कब आती है और हम लोग कब सिलेक्ट होंगे इसका कोई पैटर्न नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि 1 1 साल 2 2 साल वैकेंसीज नहीं आती, तो आप लोगों को उसके रिलेटेड तैयार रहना है, जॉब करते करते करना है। हम लोग क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर ओके। हाँ ठीक है। तो हम लोग थे कि कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, एक मैंने बता दिया आपको कि बीफार्मा कैंडिडेट के लिए अच्छा ऑप्शन है। ओके सर, इसके पहले की स्लाइड लेना प्लीज। तो आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है और थ्योरेटिकल भी पढ़ना है। मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ का, जब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसमें छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है, और छत्तीसगढ़ के जो भी रिवर्स कौन से है, लैंग्वेज कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ के ऊपर उन्होंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे थे 20 मार्क के। ठीक है, और 20 मार्क्स एकदम इम्पोर्टेंट थे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि सिलेबस में उन्होंने इतना कुछ मेंशन नहीं किया था, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी रीजनल स्टेट लेवल की एग्जाम रहती है, तो बहुत सारे जो कुछ स्टेट है वो उनके ऊपर रीजनल इस पे इसलिए क्वेश्चन पूछते कि वो चाहते कि उनके रीजनल लोग ज्यादा सिलेक्ट हो जाए। तो इसलिए हमें हर तरीके से प्रिपरेशन करना है। ये होगा थियोरेटिकल, आपने चलो अभी थियरी एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू भी उतना ही बड़ा पार्ट है। रेस में जो लोग इंटरव्यू में अच्छे रहते हैं, वो लोग थियोरेटिकल जो लोग हैं उनसे भी आगे चले जाते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी इंटरव्यू में कुछ जो बेसिक चीजें हो, तो गवर्नमेंट जॉब रहे या फिर कोई भी जॉब रहे, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंटरव्यू किस लिए रहता है, व्हाट इज द इंटरव्यू? इट इज नथिंग बट अ पर्सनैलिटी टेस्ट टू एक्सेस द कैंडिडेट पर्सनैलिटी। ओके, आपका अपीयरेंस जो है वो प्रॉपर चाहिए, फॉर्मल चाहिए। जो अगर अगर मैं ड्रग इंस्पेक्टर की बात करता हूँ, तो ड्रग इंस्पेक्टर के पैनल में ड्रग कमिश्नर रहते हैं, असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर रहते हैं, सेंट्रल से कुछ हेड आए रहते हैं, स्टेट से कुछ हेड, ऐसे 5 या 6 लोग रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नॉन फार्मा भी पर्सन रहते हैं। तो ये सभी जो है, ये सब प्रोफेशनल और एकदम हायर पोजीशन पे जो लोग रहते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी क्या होता है, इंटरव्यू जाते वक्त सबसे पहले तो हमें एंजाइटी रहती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस रहता है कि मैं इंटरव्यू में अगर फेल हो जाऊंगा तो कैसा होगा। तो एंजाइटी बहुत बार फेल्यूर का रीजन रहता है। सो बी रिलैक्स, बी कैजुअल। आपको जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, एकदम फॉर्मल ड्रेस पहनिए, कॉन्फिडेंस रखिए, चेहरे पे छोटा सा स्माइल चाहिए, तो आपका अपीयरेंस एकदम से फॉर्मल लगना चाहिए। आप शूज क्या पहनते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इंटरव्यू के पहले आप किस तरीके से बैठते हो, किस तरीके से आपका बॉडी पोस्चर है, दिस ऑल पार्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे बॉडी पोस्चर के बाद में कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस रिलेटेड आते हैं। देखो, अभी आप लोग जॉब कर रहे हैं या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है इंट्रोड्यूस अबाउट यूर सेल्फ। अब इंट्रोड्यूस अबाउट यूर सेल्फ में आप लोग आपका जॉब प्रोफाइल भी बताओगे शॉर्ट में। सो माइट बी दे आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन योर जॉब प्रोफाइल, कि आप क्या करते हो, किस तरीके से काम करते हो, उससे रिलेटेड आपको कितना आंसर आता है। अगर आप एनालिसिस में काम कर रहे हो, तो आपने एचपीएलसी हैंडल किया है, आईआर हैंडल किया है, कौन सी क्वालिटी टेस्ट आप करते हो, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग जो भी जॉब करते हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रहना जरूरी है। ओके, उसके बाद में उनका इंटरेस्ट रहता है कि व्हाई यू वांट टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो आपको ड्रग इंस्पेक्टर के प्रोफाइल के बारे में क्या पता है, एफडीए क्या होता है, यूएस एफडीए क्या होता है, डब्ल्यूएचओ ऑडिट क्या होता है,
ड्रग इंस्पेक्टर्स के राइट क्या क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर की, तो सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर फार्मा कंपनी को ऑडिट करते हैं, WHO ऑडिट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। इसके अलावा वो ब्लड बैंक का भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, API प्लांट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ या फिर WHO ऑडिट की बात करूँ, तो ड्रग इंस्पेक्टर किस तरीके से ऑडिट करते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आप क्यों बनना चाहते हो, इसका रीजन सैलरी नहीं रहना चाहिए। इसका एक अच्छा आंसर आपके पास चाहिए कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर क्यों बनना है, व्हाट इज द, और ड्रग इंस्पेक्टर के किस तरीके से जॉब प्रोफाइल होता है। उसके बारे में कभी कभी आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछते हैं कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से पता किया, क्या पता है आपको। उसके बाद में फिर बात आती है फार्मा की, क्योंकि यू ऑल आर द फार्मा स्टूडेंट, सो सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में वो लोग पता करना चाहते हैं। अब जो एमफार्मा स्टूडेंट्स रहते हैं, वो लोगों को, अगर आप एमफार्मा आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो डेफिनेटली वो लोग आपके थेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे ही। अब क्या होता है, हम लोग 4-5 साल के बाद में जॉब करते रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि एमफार्म में क्या थीसिस किया था, कभी कभी तो टॉपिक का नाम भी याद नहीं आता। और मैंने जो 5 साल पहले सेंट्रल में UPSC का जब ड्रग इंस्पेक्टर के इंटरव्यू हुए थे, पहले दिन के स्टूडेंट्स को जिनको जिनको थीसिस पूछा, उनको लगा ही नहीं कि थीसिस के बारे में पूछेंगे। तो कोई वो क्वेश्चन मिस थीसिस को उनको उनको पढ़ के ही नहीं गए थे, या वो टॉपिक भी भूल गए थे। तो देखो इतना बेकार सेटबैक बैठता है कि इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन से हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये भी पूछेंगे। ओके, सो अगर आप एमफार्मा पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको थीसिस के बारे में पता ही चाहिए, आपने क्या रिसर्च किया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका कंक्लूजन क्या आया, आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि फार्मा के अलावा नॉन फार्मा पर्सन भी रहते हैं, ठीक है। अब वो नॉन फार्मा पर्सन किस लिए रहते हैं, दे चेक योर सोशल नॉलेज, कि नेशंस में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सोशली आपका सोशल थिंकिंग क्या है, आप पे लीडरशिप है या नहीं, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी आपकी कितना है। बिकॉज एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा रिस्क होती है। अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर रेड करता है कोई कंपनी में, तो उसको सब राइट्स पता चाहिए, उसमें वो कैपेसिटी रहना चाहिए कि वो लीड करे, वो हैंडल करे सिचुएशन को। तो इसलिए आपका माइंड और आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए सोशल क्वेश्चन भी रहते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन रहते हैं, और आप कितने ज्यादा अवेयर हो सिचुएशन के बारे में, ये चीजें पता करने के लिए भी क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली। अगर कैंडिडेट का पहले 4-5 मिनट में अगर लगता है उनको कि नहीं यार, ये कैंडिडेट में कुछ ज्यादा मिस क्वालिटीज नहीं दिख रही है, तो शॉर्ट में ही वो इंटरव्यू निपटा देते हैं। पर अगर उनको लगता नहीं कि ये कैंडिडेट अच्छा है, तो कुछ कुछ इंटरव्यू 30-40 मिनट तक चलते हैं। 30-40 मिनट तक इंटरव्यू चलना मतलब आपके चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो कैंडिडेट का 5-10 मिनट में हुआ और जो कैंडिडेट का 30-40 मिनट तक चल रहा है, इसमें डिफरेंस यही है कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, उनको आप में इंटरेस्ट है, इसलिए आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टू हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, गुड पर्सनल अपीयरेंस, क्वेश्चंस के आंसर क्लियरली दो, जो क्वेश्चन के आंसर नहीं पता उसको मत दो। ये हम कॉलेज में वाइवा नहीं दे रहे हैं कि हम हर एक क्वेश्चन का आंसर कुछ भी दे दे और आगे वाला हमें कुछ भी नहीं बोलेगा। यहाँ पे उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। पोलाइटली एक्सेप्ट करो कि सर प्लीज आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके। और कहीं पे भी ज्यादा एंजाइटी नहीं आना है, बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हो, आपके चेहरे से एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं दिखना चाहिए, डिप्रेशन भी नहीं दिखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्लाइड सर। कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। कुछ कुछ लोगों को आदत रहती है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका छोटा सा आंसर है, वो लोग उसको भी 2-2 3-3 मिनट खींचेंगे। जैसे कि हम थ्योरी पेपर में लिखते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हम 4-5 पेज लेके आते हैं। तो कभी भी शॉर्ट एंड स्वीट में आपको आंसर देना है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस बताए, इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन जॉब एक्सपीरियंस, आपका CV आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो वो लोग आपका CV देख के, आपके CV में जो भी चीजें रहती, हॉबी रहती, स्ट्रेंथ रहता, वीकनेस रहता, आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ रहता, या फिर आपने डिग्री में कोई प्रोजेक्ट किया हुआ रहता, इसके बारे में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, थीसिस के बारे में, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग के बारे में। ये क्वेश्चन मैंने बताया, व्हाई डू यू वांट टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो उसके बाद में ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, और सबसे मेन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, न्यू रूल्स रेगुलेशन लाइक NDCT, NDA, क्लिनिकल ट्रायल, INDA, मेडिकल। अभी कैसा हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर ही मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर भी बन गए।
ठीक है। बीच में क्या हुआ था कि मेडिकल डिवाइस ऑफिसर के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग इन मेडिकल डिवाइसेस वालों को चार्ज दिया था, बट जो अभी जो डिसीजन आया है, तो ड्रग इंस्पेक्टर ही मेडिकल डिवाइस, इसलिए आपको मेडिकल डिवाइसेस के रूल पता चाहिए। अगर मैं एमपीएससी की बात करता हूँ तो लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन आएंगे, एमपी की बात करूंगा तो वहाँ हिंदी लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करना है। कुछ जो क्वेश्चन है उसके आंसर जब तक आप प्रिपेयर करके नहीं जाओगे, आप कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे। अगर आप ये कॉन्फिडेंस में रहोगे कि नहीं यार देख लेंगे आगे में, जो जिस तरीके से बॉलिंग आएगी उस तरीके से बैट घुमाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। इट्स नॉट अ T20 मैच, आपको प्रिपरेशन करके जाना, इट्स अ टेस्ट मैच। तो इसके लिए प्रिपरेशन लगता ही है। आपने एमपीएससी यूपीएससी के इंटरव्यू देखे, मॉक इंटरव्यू। हम जब ये कोर्स लॉन्च करते हैं तब हमने बहुत सारे, अभी पिछले हर एक बैच का हम लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं, तो मॉक इंटरव्यू में मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको नॉलेज होता है वो इंटरव्यू में फेल होते हैं। हम मॉक इंटरव्यू में ही देखते हैं कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस चाहिए, इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम थ्योरी पार्ट के लिए देते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे है ना, बहुत बहुत ही कॉमन और छोटी छोटी चीजें हैं, पर हम इस चीजों पे ध्यान नहीं देते। अगर आपको 5 सीट्स है ड्रग इंस्पेक्टर की और 10,000 वैकेंसी, 10,000 एप्लीकेशन आए हैं, तो 5 लोगों में सिलेक्ट होने के लिए आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। हर चीज में आपको परफेक्ट बनना है। आपका थियोरेटिकल नॉलेज, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका इंटरव्यू, एक एक मार्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, एक एक मार्क। अगर आप सोचोगे कि नहीं आपको कैजुअली लेना है और आप अपने लाइफ का टाइम देने में भी अभी भी कंजूसी कर रहे हैं, तो ये चीजें मुश्किल है। जो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेगा, जो जॉब करके डेली 2-4 घंटे पढ़ेगा, अपना वीकेंड जो सेक्रीफाइस करेगा पढ़ाई देने के लिए, वही यहाँ तक पहुंच सकता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं सब करके इसको थोड़ा सा टाइम देके ये कर लूंगा, तो ये, अगर 87 वैकेंसीज है उसमें से 7 स्टूडेंट के साथ लकीली सिलेक्शन होता है, बाकी 80 लोगों को मेहनत करके ही जाना है। फिर उसमें भी क्राइटेरिया रहता है, SC ST NT VJ OBC, फिजिकली हैंडीकाप, ओके, डिफनेस, ये सब क्राइटेरिया रहता है। तो सोचो कि आप कौन से सीट्स में आ रहे हैं, कहाँ पे आपकी कंपटीशन कितनी है, कितने लोगों से है। ये सब चीजें आपको समझना है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो आज के जो लेक्चर है ना, इससे डेमो लेक्चर राजेंद्र सर ने लिया कि कोलॉजी इस तरीके से पढ़ा जाता है, पर अभी उसको सिस्टमेटिक वे से डिवाइड करके एक एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में सब चीजें पढ़ लेंगे और आपने भी याद कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। फ्रेशर का फ्रेशर जो लोग जस्ट बी फॉर्म अभी अभी हुए, उनका उनको जल्दी जल्दी ये चीजें समझ में आएंगी, पर जिनका 3-4 साल का गैप हो गया उनको ये समझने में मुश्किल जाएंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा वॉशअप हो गया है। तो उस हिसाब से भी हमें पढ़ना होगा। अभी मैंने बताया कि थियोरेटिकल में, अभी इंटरव्यू की हमारा समझ लो इंटरव्यू का मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में क्या क्या होता है। थियोरेटिकल में एप्टीट्यूड भी मेन है। 25% एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन रहते हैं। जो हम स्कॉलरशिप में पढ़ते थे 4th स्टैंडर्ड में, बस सेम ही एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। मैथ रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेंगी, इंडक्टिव रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल, डिडक्टिव, क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं, रिलेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं, मैथमेटिकल जो क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। तो 25% मार्क्स के रहते, इसलिए हमें एप्टीट्यूड भी पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है स्टूडेंट। तो आज का जो डेमो सेशन था इसमें हमने कोलॉजी का एक शॉर्ट में बताया, ऐसा ही पूरा सिलेबस जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा डे वाइज। संडे टू संडे कोलॉजी के कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना है बाकी सब्जेक्ट के, फिर उसके ऊपर हमको टेस्ट देके देखना है। तो क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस हमें आएगा, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, जो खुद आदमी कर सकता है पर वो हम नहीं करते। इसलिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें हम वैकेंसीज के बारे में अपडेट करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज पता चलना बहुत जरूरी रहता है। फ्रेशर की वैकेंसीज निकलती है, ड्रग इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की, किसी को नहीं पता चलता। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहते हैं, पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए हम लोग वैकेंसीज डेली अपडेट करते हैं गवर्नमेंट की। अप्लीकेशन प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट वेबिनार लिया था, हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एमपीएससी, क्योंकि मुझे कॉल आते थे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो वो भी प्रोसेस बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग उसके लिए भी असिस्ट करते हैं। सिलेबस को अंडरस्टैंड करके उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए अच्छे ट्रेनर से पढ़ना, ट्रिकीली पढ़ना। हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर सेशन अगर होते हैं तो हमें थोड़ा समझने में इजी जाता है।
शॉर्टर नोट्स बहुत जरूरी है, और हमारे पढ़ाई के साथ साथ इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, और आप पे कोई ना कोई पर्सनल अटेंशन देने वाला चाहिए। तो हमने ये जो कोर्स डिजाइन किया, अब ये दो टाइप्स का है। एक जो है कम्प्लीटली प्योर ड्रग इंस्पेक्टर के लिए और ड्रग कमिश्नर के लिए, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में ही हम लोग बताएंगे। और एक हमने डिग्री के जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है या सिर्फ जो डिग्री अभी पास आउट हुए, जो इनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं, उनके लिए एक कोर्स जो डिजाइन किया, उसमें हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और फार्मासिस्ट और बाकी गवर्नमेंट जॉब का भी उनको प्रिपरेशन दे रहे हैं। सो हम इस पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि सिर्फ हम ड्रग इंस्पेक्टर ही बनेंगे, हम फार्मा का हर एक जो भी एप्लीकेशन रहेंगी उसके ऊपर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, स्टेट की रहेंगी। एम फार्मा स्टूडेंट है तो रिसर्च बेस पे जो वैकेंसीज गवर्नमेंट की लेती है उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो बी फार्मा कैंडिडेट जो विदाउट एक्सपीरियंस है उनके लिए भी हमने एक अलग से कोर्स डिजाइन किया है, और ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कमिश्नर के लिए अलग से कोर्स डिजाइन किया है। ड्रग इंस्पेक्टर का जो कोर्स है उसका फीस जो है 13,000 है, और जो बी फार्मा कैंडिडेट के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अदर गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए जो कोर्स डिजाइन किया उसका फीस जो है 10,000 रुपीज है। ओके, और वैकेंसीज है जो है वो दोनों ग्रुप अलग अलग रहेंगे, दोनों को अलग अलग अपडेशन मिलेगा। फॉर्म भरने से लेके उनके इंटरव्यू के प्रोसेस तक हमें साथ रहना है। 4-5 महीने में कोर्स भले ही खत्म हो जाएगा, पर 1 साल 2 साल 3 साल तक हम लोग उन कैंडिडेट के साथ में रहेंगे। जब भी फॉर्म निकलेगा वो लोग हमें कनेक्ट करेंगे, हम लोग उनको गाइड करेंगे, तो वो ग्रुप 2-2 साल 3-3 साल भी रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे से कनेक्ट हुआ हुआ हर बंदा गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचे, और उसी हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, हम लोग इसको सिस्टमैटिक वे से डिजाइन कर रहे हैं कि ये सबसे अच्छा कोर्स बने जो फार्मा स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो क्योंकि बहुत लोगों की कॉल आ रहे थे कि सर ड्रग इंस्पेक्टर का भी करना है, पर बीफार्मा पास आउट हो, जैसे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं, तो बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अलग से प्रिपरेशन 60-70% मैच होता है, 20-30% अलग है। तो हम चाहते हैं कि 20-30% फोकस ड्रग इंस्पेक्टर वालों पे अलग से किया जाए और इधर डिग्री वालों पे अलग से किया जाए। ओके, तो इसी तरीके से ये कोर्स डिजाइन किया है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो भी आपको क्वेश्चंस है ना, अभी आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारे बहुत सारे वेबिनार है, अभी तक 25 बैचेस कंप्लीट किया है, 600 के अबो प्लेसमेंट है। रिकॉर्ड है कि 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ काम करते हैं, असिस्टेंस के साथ नहीं। और फार्मा के इसके लिए भी हम लोग वैसा ही काम करेंगे। माइट भी नेक्स्ट आफ्टर 2 to 3 years रेस के ही सबसे ज्यादा ड्रग इंस्पेक्टर भी रहेंगे और गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करके लेंगे। जो लोग सीरियस है सिर्फ उन्हीं के लिए ये कोर्स है। जो लोग लाइटली ले रहे हैं कि नहीं कुछ तो भी पैसे पे कर दिए तो कभी कभी लेक्चर ज्वाइन करेंगे, कभी कभी टेस्ट सीरीज देंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को हम बीच में से डिसकंटिन्यू करेंगे। ओके, क्योंकि हम अगर एडमिशन देते हैं सो वी आर द रिस्पॉन्सिबल कि हम लोग आपको उस पोजीशन तक पहुंचाएंगे। 1 महीने 1.5 महीने में हमें लगता है कि दिस इज नॉट द राइट कैंडिडेट, जिससे हमारा नाम खराब होगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे साथ ये कोर्स कंटिन्यू करे। हम 50% फीस रिफंड करके उनको डिसकंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम प्लेसमेंट के बैचेस में भी इसी तरीके से करते हैं कि 4-4 5-5 संडे अगर कोई क्लास ही ज्वाइन नहीं कर रहा विदाउट वैलिड रीजन, तो हम बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू गिव यू द प्लेसमेंट। क्योंकि हम जो बताएंगे, जो पाथ बताएंगे, जो स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, तो उसमें 50% इन्वॉल्वमेंट हमारा रहेगा, तो 50% इन्वॉल्वमेंट कैंडिडेट का रहेगा। तो इसलिए जिसको भी एडमिशन लेना है, सो जो सही में सीरियस है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उतने ही कैंडिडेट हमें चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ 30 स्टूडेंट्स की बैच लेके काम करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उस पे हम लोग पहले बैच पे फोकस करेंगे। उसके बाद के जो बैचेस है इसके एक्सपीरियंस के ऊपर से हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे कि कितनी बड़ी बैचेस बना सकते हैं। ओके, अभी जो ड्रग इंस्पेक्टर की बैच है, जस्ट आज के डेमो लेक्चर के बाद में नेक्स्ट संडे से उसको सिलेबस वाइज स्टार्ट होने वाली है। ओके, जिसका सिलेबस हम लोग डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट संडे में, और एक सेशन, और उसके बाद में हर एक संडे में लेक्चर रहेगा और टेस्ट भी रहेंगी। टेस्ट जो है 2-3 संडे के बाद चालू होगा, क्योंकि 2-3 संडे सबको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए जो बैच चालू हो रही है गवर्नमेंट जॉब की, टोटली गवर्नमेंट जॉब, फिर वो बी फार्मा, एम फार्मा, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मेसी, सब 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 आगे उसमें, वो 24 मई से स्टार्ट हो रही है। ओके, सो आपको इंक्वायरी के लिए नंबर देता हूँ। सर आपने नंबर लिखा है कहीं पे स्लाइड पे कोई? ओके,
ये जो 9321350552 है और जो नेक्स्ट नंबर है, ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन की डिटेल ले सकते हो। आपको चैट बॉक्स में फीडबैक का लिंक दिया है जिसमें आप वो फीडबैक दे सकते हो, और जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और भी आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए थे, जस्ट अ मिनट, क्या आए थे क्वेश्चंस? ट्रिपोलॉजी के बारे में आए थे। और किसी को कुछ गवर्नमेंट जॉब या ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है? वरुण सर, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ सौरभ बोलिए, सर आपको कुछ पूछना है? महाराष्ट्र का क्राइटेरिया क्या है सर फॉर महाराष्ट्र का क्राइटेरिया अभी हाई जो कोर्ट में डिसाइड होने का है, क्योंकि स्टे आया हुआ है वैकेंसीज पे। फाइनल क्राइटेरिया नेक्स्ट 1 या 2 मंथ में आ जाएगा, क्योंकि शेड्यूल C1 का था और पैकेजिंग और प्रोडक्शन के सॉरी टेस्टिंग के एक्सपीरियंस का था, उसके ऊपर जो है स्टे लाया गया, तो माइट भी 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम उसका क्राइटेरिया आ जाएगा। और जो आरोग्य विभाग के फार्मासिस्ट की एग्जाम थी, उसका भी 15 दिन 1 महीने में डिक्लेरेशन आ जाएगा। वो भी बहुत मेगा रिक्रूटमेंट है, तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है जो अभी फार्मासिस्ट की निकली हुई है। ये समीक्षा, आपको कुछ पूछना है? Yes, sir. हाँ, Sir, are yes. we eligible for the other state also? Yes, yes, definitely. You are eligible for other state also. How many percentage are having for us? You require the registered candidate. आपका बीफार्मा का PCI का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट करके। उनकी रिक्वायरमेंट में अपनी कितनी परसेंटेज रहती है सर? अपनी भी कुछ क्राइटेरिया रहता है? नहीं, स्टेट वाइज ऐसा कोई कोटा नहीं आता, पर आप अदर स्टेट में अप्लाई करते तो आप ओपन में अप्लाई करते हो, ठीक है। आप OBC या कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप अगर महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र में आपको कैटेगरी का रूल अप्लाई होगा, अदर स्टेट में आप ओपन में आओगे, क्योंकि डोमिसाइल आपके पास महाराष्ट्र का रहेगा। हाँ, डोमेस्टिक। हाँ, और UPSC में आप कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हो। हेलो सर। यस सर, असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर का सिलेबस नहीं है अवेलेबल। असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर का सिलेबस इसलिए नहीं आया है क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू आएंगे होंगे। अभी जो हमने पता किया तो 600 से 700 फॉर्म आए हुए हैं असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर के लिए। सो अभी 600-700 कैंडिडेट का इंटरव्यू पॉसिबल है, ये अभी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। अगर उनको लगता है कि अलग अलग सेंटर में 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू वो लोग ले सकते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी, पर मुझे नहीं लगता कि 600-700 पॉसिबल है। तो वो लोग पहले तो देखो उसमें से फिर से फिल्टर करेंगे। सो 600-700 में से 302 या 300 जो कैंडिडेट है वो डॉक्यूमेंट बेस पे ही कट होते हैं, जो हमेशा जो मैंने देखा है इतने सालों से। सो बचेंगे 300 या 400 कैंडिडेट। ओके, अभी 300 या 400 कैंडिडेट में 50 से 100 कैंडिडेट रहेंगे जो ऑलरेडी ड्रग इंस्पेक्टर है स्टेट में, सेंट्रल में, ठीक है। और बचे हुए 150-200 कैंडिडेट रहेंगे जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो 300 कैंडिडेट में इंटरव्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो इट माइट बी द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए थियोरेटिकल नॉलेज भी लेना पड़ेगा और इंटरव्यू की, क्योंकि उसके ऊपर स्टे नहीं आया है। तो 2 या 3 महीने की बात है, 2-3 महीने में असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर का रिक्रूटमेंट हो जाएगा। सिर्फ DI के वैकेंसी पे स्टे आया था। यस सर। मेयर सर अभिजीत, ये असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर का सर मैंने फॉर्म भरा है और मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। ओके। और मैंने शेड्यूल C में ही किया है, लेकिन शेड्यूल C मतलब मैं इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ, तो उसका प्रूफ क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे? इंडस्ट्री से आपको जहाँ का एक्सपीरियंस आपने डाला हुआ है ना शेड्यूल C का, आपको एक डिक्लेरेशन लिख के लाना पड़ता, जो आपको कंपनी देंगे आपकी। कंपनी देगी ना सर? वही थोड़ा इश्यू था। यस, कंपनी देती है। आप कंपनी को रिक्वेस्ट करते हो, कंपनी आपको उनके लेटर हेड पे लिख के देती है कि अभिजीत गायकवाड़ हैविंग द दिस इयर्स एक्सपीरियंस इन द शेड्यूल C एंड C1, ठीक है। तो ये लिख के देते हैं। और देखो, कोई भी फेक सर्टिफिकेट किसी ने अप्लाई भी मत करो, क्योंकि क्रॉस चेक होता है। आपका जब रिक्रूटमेंट होता है उसके पहले वो क्रॉस चेक होता है हर एक कंपनी से। ओके।
ओके ओके थैंक यू। यस, और कौन है? हाँ सर मतलब पास आउट होने के बाद मतलब गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब करते हुए टाइम कैसे मैनेज करें, मतलब टाइम मैनेज करते आना चाहिए सर, मतलब देखो, दिन में जो है ना, दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 10 घंटे या 12 घंटे हमारे जॉब और बाकी चीज में जाते हैं। अगर यस हम यस 8 घंटे की भी नींद लेंगे तो भी 20 घंटे होते हैं। फिर भी हमारे पास 4 घंटे, 4 घंटे में से भी 4 घंटे नहीं, 2 घंटे भी डेली पढ़ाई की तो भी सफिशियंट है, क्योंकि आपके साथ बाकी जो कैंडिडेट है वो भी उसी लेवल के हैं। तो टाइम आपको वीकेंड का टाइम वेस्ट नहीं करना, वीकेंड में आपको 5-6 घंटे करना है। यस सर साइड बाय साइड आपके हेलो मोबाइल में आपको पढ़ते रहना है। ओके, हेलो तो वही वही हेलो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस, बोलिए कविता। हेलो। हाँ सर। यस, हेलो सर क्या शेड्यूल सी का डिक्लेरेशन देना मस्ट है? हाँ, आपका एक्सपीरियंस जिसमें उसका सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्चुअली हाँ यार, बट द थिंग इज कि मैंने जहाँ से लाइक एक्सपीरियंस लिया है, सो आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे एक्सपीरियंस लेटर पे मैंने वो ऐसे स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है नहीं नहीं, कि तो लाइक। आपको अभी देखो, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलग है जो आपके पास है। जी आपका जी जी। रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू के वक्त, या फिर जब फाइनल, जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम लग गया, तब ओके आपको सर्टिफिकेट जो है डिक्लेरेशन कंपनी में जाके लिख के लाना पड़ता है, फ्रेश, ओके ओके। सो अभी के डेट का। वो मुझे लाइक इस केस में वो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मुझे एंटरटेन करेगी जब वो। डेफिनेटली एंटरटेन करेंगे, क्योंकि आप उनके कंपनी के एम्प्लॉय हो, और आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर बनते हो तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के बाद करेंगे। ओके सर ओके। एंड सर वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क कि अभी द थिंग इज कि मुझे सैटरडे ऑफ रहता है और संडे ऑफ हम्म नहीं रहता है। हम्म सो अभी इस केस में मैं कैसे अटेंड कर सकती हूँ ऐसे लेक्चर्स? केस में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो हम्म। स्टूडेंट देते हैं, और जो हमारा टेस्ट सीरीज रहता है उसका दिन भर का 12 घंटे का टाइम रहता है, तो उस टाइम में आप कभी भी दे सकते हो। ओके ठीक ओके, है, दैट आई कैन डू। ओके हाँ, ओके सर। तो बाकी तो बाकी पूरी फैसिलिटीज रहेंगी उनको। और कभी उनको ओके लगता है कि ट्रेनर से कुछ डिस्कस करना है, तो वो लोग सैटरडे को कॉल करके हम लोग वैसा अरेंज करवाएंगे। जी जी। तो सो इन दिस केस की मुझे संडे के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, तो मीनवाइल मिल मैं जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग सुन के फिर हाँ, सैटरडे को कम्युनिकेट कर सकती हूँ, है ना? कर सकते, आप इन जी। बिटवीन भी कभी भी कॉल कर सकते हो, जो डायरेक्ट हमारे ट्रेनर से, एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हो टॉपिक के लिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। कविता। हेलो यस हेलो। हाँ यस सर, सचिन। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हमारा डिप्लोमा, डिग्री और पीजी ये तीनों किया है, लेकिन ओके, पीसीआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो डिप्लोमा के बेस पे किया था, वही है, तो विल इट वर्क? यस यस, वो चल जाता है, पर अभी टाइम रहा कभी भी तो जाके सिर्फ अपडेट कर देने का। अभी ऑनलाइन भी ओके अपडेशन आया हुआ है, तो आपको थोड़ा हाँ नॉमिनल ओके फीस भर के आपका एजुकेशन उसमें अपडेट कर दो। ठीक है, ओके, आई और विल डू दैट। एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। नो नो, इट इज वैलिड ऑफ 2014। हाँ, इट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है। ओके और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेट करो, नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ओके। ठीक है, और विशाल ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं किसी ने। जीपैट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू के टाइम पे। आई एम अ पीजी स्कॉलर, एमडी आयुर्वेदा स्टूडेंट, इज 18 months एक्सपीरियंस कंपलसरी टू क्वालिफाई फॉर एग्जाम। मैंने वही बताया कि स्टेट वाइज क्राइटेरिया अलग अलग है, पर अभी एमपीएससी में जैसे 18 months का एक्सपीरियंस कंपलसरी था, उसके लिए स्टे आया हुआ है, तो माइट भी होपफुली देखते हैं कि क्या होता है। Sir, फिर फार्मडी, what हाँ यस what about UPSC? Is the experience यस, necessary for that also? यूपीएससी में भी फिलहाल 18 months एक्सपीरियंस जो टेस्टिंग का है वो कंपलसरी था लास्ट इसमें। तो लास्ट इसमें कुछ लोगों ने पिटीशन किया था, हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है। कुछ दिनों में जब यूपीएससी की वैकेंसी निकलेंगी तो नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आएंगे, ठीक है। Okay, sir. Thank you. तो जिन्होंने पिटीशन किया था उनको अभी रिक्रूटमेंट हुआ है। तो Okay, sir. जो अभी यूपीएससी की वैकेंसी आएंगे, इट्स टोटली विथ न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। महेश सर। फार्मडी स्टूडेंट्स अभी भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। यस नितिन। हेलो। यस यस। Regarding experience, R&D and formulation development
experience is देखो okay लास्ट टाइम for this. उन्होंने लास्ट टाइम यूपीएससी ने क्या किया था कि आरएनडी का एक्सपीरियंस काउंट किया था, एफएनडी का नहीं किया था। ओके, तो FND इसलिए का नहीं किया था। हाँ, तो एफएनडी की कुछ लोगों ने पिटीशन किया था, वो केस वो लोग जीत गए, तो फिर उनका रिक्रूटमेंट हुआ है। तो अभी नेक्स्ट टाइम से एफएनडी आरएनडी दोनों का भी एक्सपीरियंस काउंट होगा For drug commissioner के लिए। ड्रग कमिश्नर के लिए भी। देखो Okay, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ ना, तो Yes, yes. 95% चांसेस आपके है, 5% चांसेस है वहां पे वेरिफिकेशन में क्या होता है। Okay, okay. क्योंकि कैसा है, ये लोग कहीं पे भी कोई भी क्राइटेरिया उठा लेते हैं, तो हम लोग आखिरी के एंड तक गेस ही नहीं कर पाते। Okay, okay. क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी ये लोग कभी कभी फिल्टर लगाते हैं। Okay. अभी कुछ लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हुए, जो एक्सपीरियंस में अगर कुछ अलग डालते, टेस्टिंग नहीं डालते तो इसलिए फॉर्म भरना भी बहुत जरूरी है। आप जब चेक एलिजिबिलिटी किया होगा आपने, क्योंकि Yes, आपका yes. एमपीएससी का फॉर्म था, चेक एलिजिबिलिटी किया है ना, तो ऑटोमेटिकली पहले तो पहला फिल्टर वहीं पे लग जाता है क्राइटेरिया पे। वहां पे सिलेक्ट हुआ मतलब आपके 95% चांसेस है कि आपका रिजेक्शन होने के चांसेस कम है। ये इंटरव्यू शेड्यूल का कुछ आया है क्या, कब मतलब? ये महीने में आएगा असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर का। ओके, ओके। उसका 2 महीने 3 महीने में ही रिक्रूटमेंट होगा। ओके, इसके ड्रग कमिश्नर के लिए क्लासेस विद डीआई के साथ होंगे या फिर? नहीं, अगर देखो सर, उसका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है 1 महीने में, तो उनको हम अलग से उतने कैंडिडेट को डायरेक्टली इंटरव्यू का प्रिपरेशन देंगे। और अगर 3 महीने में हमें लगता है कि अभी ड्रग कमिश्नर के लिए हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है, उनका प्रिपरेशन करवाना है, तो उनका हम फास्ट इसमें टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स में तैयारी करेंगे। और इंटरव्यू का भी, तो उनका फिर अलग से हमको तैयारी करके लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, या इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? हॅलो सर. यस तर आता नेक्स्ट वीक मध्ये संडेला आपला सेमिनार असेल, तर त्यावेळेस तुम्ही म्हणजे आजच सांगणार का की नेक्स्ट टाइम कोणता सेमिनार होणार आहे सब्जेक्टवर? नहीं, आम्ही सैटरडेला आता बघा, नेक्स्ट संडे को जो है पहले तो सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज उसको डिवाइड किया हुआ है कि ये डेट को ये टॉपिक रहेगा, ये डेट को ये पेपर रहेगा, ये डेट को ये टॉपिक रहेगा। अब उसके हिसाब से आगे के कंटिन्यू 5-6 महीने का टारगेट पकड़ के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सही है सर। वो क्या रहेगा सर, इस संडे को आपने बताया कि अगले संडे को अपना कोलॉजी रहेगा, एनाटॉमी रहेगा या मेडिसिनल वो तो पूरा सर रहेगा। 5-6 महीने का आ जाएगा, पूरा 5-6 महीने का ही मिलेगा आपको शेड्यूल एक ही बार में। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, वैसे स्टडी करने के लिए मग हम एक वीक क्योंकि स्टडी कैसा है, करके देखो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। अभी पूरा आज सर ने लेक्चर लिया फार्माकोलॉजी का, उतना ये नहीं हुआ अभी माइंड को उतना। नहीं, वो एक्चुअली जनरल फार्माकोलॉजी था। और सर ने जो लेवल पे पढ़ा वो जीपैट के लेवल पे था। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को अभी वो थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता अगर है मैं वो। बीफॉर्म फ्रेशर हूँ तो मैं फट से उसको याद कर पाता हूँ। तो वो सब चेंजेस हम लाने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला कि बीफॉर्मा की बैच अलग से चालू कर रहे हैं और सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कमिश्नर के अलग से चालू करेंगे। ठीक है, थैंक्स। हेलो सर। हेलो। यस कविता। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हमें मेंशन करना होगा कि लाइक हमें कौन सा पैटर्न लेना है, डीआई के लिए ले रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए? ओके, नहीं, डीआई और ड्रग कमिश्नर की जो है एडमिशन बोथ अलग विल बी है। सेम। ओके, हाँ, और बीफार्मा की बैच जो है वो 24 तारीख से चालू हो रही है, 24 से। ओके ओके, तो मुझे मेंशन करना है कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर और डीआई के लिए रजिस्टर्ड करना है करके, है कौन ना? सा कोर्स, बराबर है, यस राइट। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि कैसा है कि जो लोग अभी एक्सपीरियंस है, जिनका 50-60 हजार सैलरी है, वो फार्मासिस्ट के जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहेंगे, बराबर है। जी जी जी। तो उनका फोकस फिर उधर डाइवर्ट करने में कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उस तरीके से अलग किया है। कुछ क्लासेस साथ में होंगे, कुछ क्लासेस अलग अलग होंगे। हाँ, बट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मुझे क्लियरली मेंशन क्योंकि करना है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ना ड्रग इंस्पेक्टर कमिश्नर का, उसमें सिर्फ उसी की वैकेंसी हम लोग पोस्ट करेंगे। जी उस सर, लेवल की वैकेंसी, उसमें हम छोटी छोटी सीजीएचएस या ईएसआईसी की ऐसी वैकेंसी नहीं पोस्ट करेंगे। ओके ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू जो सर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, उसमें आपको अब हमारा जो ऐप है, वो ऐप के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और वो ऐप में जब आप लोग रजिस्टर करते हो तब क्लियर कट मेंशन वहाँ पे किया जाता है कि ड्रॉप डाउन मेनू में आता है कौन सी बैच के लिए सिलेक्ट करना है। हेलो सर। ओके सर, ओके, आई गेट इट। ओके ओके ओके। हेलो सर। यस यस बोलिए।
सर गव्हर्नमेंट एक्झाम साठी काय क्रायटेरिया असतो म्हणजे बी फार्म फार्मसी नंतर? डिग्री और डिप्लोमा रजिस्टर्ड कैंडिडेट, बस इतना ही क्राइटेरिया रहता, बाकी कुछ नहीं रहता। नहीं सर, मतलब डिग्री पास आउट होने के बाद स्टेट फार्मेसी का आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बस इतना ओके ही ओके रहता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जॉब के लिए। और ओके ओके डिप्लोमा वाले भी उसी लेवल पे रहते हैं, डिग्री वाले भी उसी लेवल पे, एमफार्म वाले सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे एमफार्म वालों को या बीफार्म वालों को एजुकेशन वाइज वेटेज मिलता है। अगर नहीं 3 कैंडिडेट मेरे सामने इंटरव्यू के लिए बैठे हैं जिनके थ्योरी मार्क्स अलग थे और इंटरव्यू के मार्क्स के लिए उनके तीनों में कंपटीशन है, डिप्लोमा वाला है, एक डिग्री वाला है और एक पीजी वाला है, तो मैं पीजी वाले को ज्यादा प्रेफर करूंगा। और ये ओके होता है, अभी मैं देख रहा हूँ एमफार्मा के कैंडिडेट ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट करके। यस सर। एमफार्मा के कैंडिडेट भी फार्मासिस्ट करके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका रिक्रूटमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। यस सर यस सर। नहीं सर, मतलब मुझे लगा कि मतलब कोई मार्क्स या परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया होता है नहीं कि नहीं, जिनके परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, परसेंटेज का फर्स्ट क्लास ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं मुझे लगा कि वही लोग सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई है। कर नहीं नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मेसी स्टूडेंट। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो थैंक यू ऑल, आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और अच्छे क्वेश्चंस सर, थे। हाँ यस। जो फार्मेसी का जो सेकंड बैच है ना, जो हाँ, फार्मेसी अभी कर रहे हैं, तो उसकी फीस कितनी है, मतलब ग्रुप को ज्वाइन करने की? बी फार्मा के लिए जो है उसका 10,000 फीस है। हेलो यस सौरभ बोलो। सर, मैं एम फार्मा कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ अभी। मैं हाँ एलिजिबल हो सौरभ, सकता हूँ सर? क्या ये बोला के लिए आपने? मैं एम फार्मा हूँ, एम अभी फार्मा कर हो रहा ना? हूँ हाँ, तो आप कर रहा हूँ सर। बी फार्म के रजिस्ट्रेशन के बेस पे एलिजिबल है आप। हाँ सर, रजिस्टर किया बी फार्म का। हाँ, तो बी फार्म के रजिस्ट्रेशन के इसमें आप एलिजिबल हो। ओके सर। पर आपको गवर्नमेंट जॉब अगर लगता है तो आपको एजुकेशन बीच में छोड़ना पड़ेगा या फिर उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा। ओके ठीक है सर। हेलो यस नितिन। Mahesh, regarding the registered pharmacist, if registry pharmacist का वैलिडिटी जो रहता है वो एक्सपायर हो गया है, वो मतलब एक्सपायर और हुआ जो तो रहता है आप, ना ड्यूरेशन टाइम, हाँ, उसको रिन्यूअल कराओ इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के पहले रिन्यू करवाना है। रिन्यूअल कराओ, ओके 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 नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहता है फिर। ओके ओके। सब जन अपना अपना एक्सपायरी डेट चेक करके उसको अपडेट कराओ, ऑनलाइन ही बिकॉज वो किया है अभी 10 सब ईयर का चीजें। आफ्टर एक्सपायरी होने के बाद रिन्यू के लिए क्या कुछ नया प्रोसीजर है सर, या प्रीवियसली ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन कर ऑनलाइन सकते हैं? ऑनलाइन है। ऑनलाइन एडी है सर। सर, आपको प्रोसेस के बारे में पता है कुछ? वेबसाइट के ऊपर जाओ, महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, वहां पे सब मिल जाएगा। ऑनलाइन ही किया है अभी सब, ठीक है। ओके ओके, ऑनलाइन जाके सबमिट करना है। महाराष्ट्र ओके स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे रिन्यूअल ओके ऑफ जो है आपका फार्मेसी दिया होगा, आपका कार्ड नंबर वगैरह यस डाल के रिन्यूअल फीस पे करके हो जाएगा वो। जिसको ओके एजुकेशन पे ओके, थैंक अपडेट यू सर। करना है वो भी वहीं पे अप्लाई करो। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, और कुछ क्वेश्चन किसी को? ठीक है, सो नेक्स्ट संडे से ड्रग इंस्पेक्टर और कमिश्नर की बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और छोटे छोटे बैच साइज में चालू कर रहे हैं क्योंकि कुछ टॉपिक जो है क्लब होंगे। और 24 से डिग्री के लिए गवर्नमेंट जॉब की बैच स्टार्ट हो रही है। ओके, सो थैंक यू ऑल। वरुण सर, आपको कुछ ऐड करना है? नो सर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था एमफॉर्म क्यूए फ्रेशर, तो पहले आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखिए और साथ साथ में ही प्रिपरेशन कीजिए डीआई का। ओके, जॉब वाली बैच हमारी 20 शायद तक, वो भी लास्ट वीक में चालू हो रही, जॉब ओरिएंटेड के लिए जो बैच रहती है फॉर पीवी, मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल और अदर जॉब का। ओके, तो थैंक यू ऑल। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, अगर बैच नहीं भी ज्वाइन करते हो तब भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है पूछना रहा तो आप डेफिनेटली कॉल या व्हाट्सअप करो। ये 9321350552 नंबर है, ये मेरे पास रहता है, जिसका व्हाट्सअप मैं हैंडल करता हूँ। तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, अगर मुझे लगता है कि कॉल करके आंसर देना चाहिए तो मैं आपको कॉल भी कर दूंगा। ओके,
So thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. चलो,